Agriculture Organization. And right now, the Director General is from China. So people are saying, well, maybe China has an intention to control some of these food supplies around the world. Yes, it's the world's largest population in the world. And when we look at the way the Chinese foreign policy has gone to different parts of the world, particularly Africa, there is a lot of that undercurrent going on. Now, what is the truth? There are people who know the truth, and there are people who will not. It is a very unsavory truth. We cannot think that way. You know, we cannot think as people of India with a certain value system. We cannot even think the way that some of these big organizations think. So we are at a disadvantage. And sometimes I feel if we start thinking that way, we will stop becoming Indians. India and being Indian means certain values. You know, we are discussing all these things here, the Vedic sciences, the et cetera, et cetera. It stems from a kind of purity that we have. And that gives rise to, always that purity will give rise to elevated thoughts and knowledge systems. And that is what we have. We have Ayurveda, we have yoga, we have Unani. Look at this amazing collection of systems, you know, Siddha medicine. And all of that is being discussed here in our platform. So sometimes I feel reluctant to go down that other path, to investigate too much, although we can see many, many things that are happening. I've shown in my slides before that 4-amino acid inserted into the spike gene between the S1, S2 domains of the spike protein. When we look at the sequence, the 4-amino acid sequence there, it is a cleavage site for an enzyme called furin. And if that cleavage site is there, it seems to make this virus spread faster within the organism and also outside. And when we look at this new virus, the new strain that is coming out, the new Omicron strain. So we are, Jagdishwarji, I'm talking about the deep protein biology, the nucleic acid biology, etc., that most of us may not have a deep understanding, but we have to use those parameters to understand the nature of this virus. I call it molecular forensics. So we have to do the forensics on the virus and ask deep questions about why the sequence is here, or what is the difference. Ye jo naya strain, the Omicron, has 32 mutations on that single gene, on that spike protein gene. It is not possible in nature to have 32 mutations coming up in such a short space of time. That is not how nature works. So there are many questions about, and the wonderful thing with this Omicron is that the symptoms are very weak. It was identified and as being understood in the Steve Biko Hospital in Pretoria, which is a hospital that specializes on patients with HIV. And if this virus is not causing such lethality in immunocompromised patients, then maybe it is a good sign. And the question is, where did this virus come from? What is the evolutionary history of this virus? ठीक है, आवाज जो है आ रही है आपके पास. हाँ, नमस्कार शर्मा जी, अब आप. So there are many questions here that we have to grapple with. So aapke question about food, you know, it is, I hope it is not correct, Jagdishwarji. I hope when we look at some of the prevalence, I mean, if we look at the human body, the virus is everywhere because the ACE2 receptor is in many parts of the body. It can even go into neurons. It affects the neurons. And so when we talk about this being in meats, if you're used to eating bat meat, then it is very likely it is in there also, but then depends on your cooking procedure, you see. And if the route of entry is through the oral route, then I suspect the possibility that this
the protein and the virus will survive, the oral route is very low. It has, the more likely route is the nasal route. And this is where procedures like Neti and Nasya come to great benefit. Today there was a meeting in Bangalore at the Transdisciplinary University on Siddha Medicine, and we were reviewing their outcome, some clinical trials, some field studies, some that are going on, effect of Nasya as prophylactic. And the results look very good. So the fact that there may be some in food, I don't know how effective it will be as an inoculum. The most effective route is the nasal route. And, you know, when we look at the news items that is there, the speed with which information is going around the world, there is a lot of fake news. And we don't know who to believe. So we have to take all these things with a little bit of caution. You know? This whole thing about fake news, the whole thing has become so political. And this vaccination story has become so political. And there is a lot of money involved. Yesterday only, sir, one news came. ICMR has developed this investigation kit for Omicron. So now this will be new business avenue for multinational companies. There are many unsavory things. So for us, if we stay firm to our thinking here and we say Nasya Neti and improving our immune system, you know, by using certain herbs, by following certain procedures, and we understand, we know that the immune system, I showed you yesterday, the immune system is ineffective, or the efficiency of the immune system changes with the ritus. You know? And hamari isme, this ritu change, the ritu sandhi and the ritu calendar, particularly just like what Agnihotri ji has told us, the ritu, this transition from autumn to winter is very difficult ritu. You know? It's a very difficult sandhi. And I don't know, Ayurveda mein kya hai, what are the, maybe Agnihotri ji can tell us something more. For this special transition from autumn to winter, क्या कुछ करनी चाहिए जी? आपने आपके presentation में जी अग्निहोत्री जी आपने बताया कि ये जो ऋतु वो उसमें this is the most difficult transition, you know. अब human physiology में क्या है, immunity क्यों घटती है इस transition में, तो हमारे पास है कुछ, हमारी आयुर्वेद में है, मगर we have to look very deep in our samhita to understand कि क्या कुछ है, commentaries, टीकाओं में क्या कुछ लिखा है, commentaryयों में क्या कुछ है, उसको लेके थोड़ा deep physiology investigation करेंगे कि हमारी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली वालों के साथ थोड़ा करें बातचीत कि यहाँ देखो हमारी संहिताओं में ये लिखा हुआ कि इस संधि में थोड़ा ध्यान, एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए. वो जो हमारी अगर दिल्ली में डॉक्टर साहब अगर दिल्ली में जाओ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, बच्चों को ये पता नहीं कि ऋतु क्या, ये हाल है हमारे देश का. ये मॉडर्न मेडिसिन पढ़ने वाले, उनको ये नहीं पता ऋतु क्या चीज है. या ये अगर उनसे पूछें कि आज देखो ऊपर चांद की कौन सी इसमें है, इसे चांद को देख के आज बताओ कि कृष्ण पक्ष में है या शुक्ल पक्ष में है. अब they don't know. ये हाल है हमारी. अगर चांद को देख के आज बताओ भाई कौन सी दिन है, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, नो आइडिया क्या चीज है, क्या वी डोंट अंडरस्टैंड, क्या चीज बता रहे हो आप. अब हमारी पूरी कैलेंडर इसके ऊपर चल रहा कि ऋतु संधि क्या चीज है, कब होनी है, थोड़ा सा ख्याल कब देखनी है. सो ये हाल, अब क्या करें, तो इसको कैसे ले आए वापस, और इसके what is, how can we bring it to the use of the common man, you know. So पवन जी शायद आ गया हमारे. जी हाँ, दोनों स्पीकर्स आ चुके हैं सर. हाँ जी. I would like to welcome on behalf of Independent Research Ethics Society
Vishwa Ayurved Parishad, Emami Jhandu, and International Interdisciplinary School Institute for Research, Education and Skill. I would like to welcome Dr. Vishnu Prasad Sharma ji, Dr. V.K. Agnihotri ji, Dr. Madan Thangvelu sir from UK, Dr. Imran Naz, Dr. Nisha ji, Dr. Sadiq Ali, Dr. Abid Ali Ansari ji, and Dr. Tasia Hakim Ansari ji, and Vaidya Rajan Patankar sir. Welcome to Ayush Samriddhi International Webinar Series. With your valuable support and guidance, we have been able to touch milestone of 269th webinar today. Right from June 2020, we have achieved this 269 with guidance of our dignitaries like V.K. Agnihotri ji, Patankar sir, Vishnu Prasad ji, Madan Thangvelu sir, and Jagdishwar sir. All have supported like anything. So now today's subject is very unique. Welcome sir. Today's subject is very unique, and I am very much impressed by Dr. D.V. Bajpai sir. Dr. D.V. Bajpai sir is with us, who is the inventor of ETG scan. ETG scan definitely was on the basic principles of Ayurvedic pathology. So I requested Dr. D.V. Bajpai sir to guide us. Namaskar to everyone. Swagatam. He is principal of nursing college there, and he is inventor of ETG scan. Not And only how he ETG builds scan. the pathology, we would like to have blessings from Dr. D.V. Bajpai sir. Swagatam. Thank you very much. Thank you everybody, all of you. सबको नमस्ते सबको. हाँ चलिए कैरी ऑन, मजा आ रहा है. जय हो आपकी जय हो. स्वागतम. डॉक्टर साहब आपसे भी थोड़ा सुने जी कहानियां. जी सर. सर ने पेटेंट तक के लिए अप्लाई किया था सर. सर ने बहुत अच्छी डिवाइस बनाई है, ETG स्कैन, जो पूरी बॉडी को स्कैन करता है. बरसों से, आज से नहीं. जी सर. स्वागतम सर. दिखाऊंगा. जी सर. स्टेज आपका है सर, गाइड कीजिए. अब आप बोलिए. ले आना वो बक्सा ले आना. रख ले यहाँ पे. हाँ शर्मा जी. जी सर प्रणाम. स्वागतम. मुझे प्रारंभ कीजिए सर. हाँ प्रारंभ कीजिए सर. अच्छा बोले वो उधर वो बैग रखा है ना, बोले. हाँ सर नमस्कार. और जितने भी सब लोग जुड़े हुए हैं, हमारे भाई हैं, बड़े हैं या छोटे हैं, सबको यथा योग्य. और कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं शर्मा जी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. आप बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, और जो इनोवेटर्स हैं या जो आयुर्वेद फील्ड के जो आए हुए हैं, हकीम में या यूनानी उसमें है या होम्योपैथी में है या आयुर्वेद में है, वो सबका आप एक साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन और इंटीग्रेटेड स्वरूप प्रस्तुत कर रहे हैं. उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. अब मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास झंडू का इतना बड़ा बैनर है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं आयुर्वेद समाज के लिए. मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से जो है 2004 से जुड़ा हुआ हूँ और अभी तक जुड़ा हुआ हूँ. उनसे बाहर नहीं है, वहीं पर है अभी फिलहाल. मैंने ये देखा है कि जितने भी आयुर्वेद में रिसर्च वर्क हुए हैं, वो सारे के सारे इंडिविजुअल आयुर्वेदाचार्यों ने किया है. और किसी भी सरकारी संस्थान में जो भी हुआ है वो ना के बराबर है. और चूंकि मैं शीर्ष स्तर की जो रिसर्च बॉडीज है भारत सरकार की, वहां मैं जा चुका हूं, और वहां वर्षों तक जो है वो मेरा लिंक बना रहा.
जो इलेक्ट्रोथिर्दोसोग्राफी तकनीक थी उसका परीक्षण भी वही हुआ है। और इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि जो भी प्राइवेट सेक्टर में लोगों ने इंडिविजुअली आयुर्वेद को बढ़ाने का प्रयास किया है वो सर्वश्रेष्ठ। सरकार ने तो कुछ नहीं किया, मैं इतना कह सकता हूँ। आज की घटना है, आप अखबार देखिए, दैनिक जागरण की तो समाचार है कि जर्मन की एक पत्रिका है मेडिकल से संबंधित, उसने कोरोनिल के बारे में एक समाचार प्रकाशित किया है। उसकी पूरी जो रिसर्च एनालिसिस है उसने उसको छापा है और उसमें अपने जो उसका मुखपृष्ठ है उसमें मुखपृष्ठ में उसने कोरोनिल के बारे में एक बड़ा विस्तार से जो है वो पूरी पिक्चर है, पूरा पेज है उसका, जो फ्रंट पेज है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कोरोनिल अगर ना होती तो दुनिया के लोग जो है एक आयुर्वेद की एक अच्छी चीज से महरूम हो जाते। तो मेरा आपसे जो है एक निवेदन ये है कि आप झंडू जैसे बैनर से जुड़े हुए हैं, हम लोग जो पार्टिसिपेंट हैं और आपकी जो संस्था है आयरस या आयुष समृद्धि, ये दोनों मिलकर के हमारे जैसे जो पार्टिसिपेंट है उनको कम से कम 2 फुट बाई 1.5 फुट का एक सर्टिफिकेट इशू कर दें कि हम आपने हमारे उसमें पार्टिसिपेट किया और इसको आप आयुर्वेद की समृद्धि में आप इनोवेटर हैं, आयुर्वेद की समृद्धि में आपने कुछ योगदान किया है। तो कम से कम जो है वो हम अपने दवा खाने में उसको लगाएंगे, उससे 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि झंडू का प्रचार हो जाएगा, जो भी हमारे क्लिनिक में आएंगे या अस्पताल में आएंगे वो सब उससे जो है वो लाभान्वित होंगे। और आपकी संस्था जो है वो प्राइवेट सेक्टर में चूंकि आप भविष्य में सब आ जाएंगे, अब ये सरकारी क्षेत्र में जो रिसर्च वर्क है वो मुझे लगता है कि ना के बराबर होगा और सब हम ही आपको सबको करना पड़ेगा करीब करीब। तो ये आप शुरुआत एक तो कर दीजिए और आज ही से कर दीजिए। जितने पार्टिसिपेंट ये बैठे हुए हैं यहाँ जो पार्टिसिपेट कर रहे सबको एक एक सर्टिफिकेट दे दीजिए। दूसरा, मैं गुरुदेव मैं क्षमा चाहता हूँ, अपने यहाँ से हर स्पीकर को सर्टिफिकेट जाते हैं और ऑडियंस जो हम लोगों को लिखती है शिवानी@imamigroup.com पे, उसको सबको हम लोग पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी शुरू से भेज रहे हैं। लेकिन मुझको नहीं मिला इसलिए आपसे शिकायत कर रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छी मैं बात करवा है, देता लेकिन हूँ बड़ा सा हो 2 फुट बाई 1.5 फुट का तो कम से कम हम अपने दवा खाने में लगाए तो हमारी इज्जत अफजाई भी होगी, हमारे कैलिबर के बारे में लोगों को पता भी लगेगा और लोग ये जो हमारे मरीज आए हैं उनको कम से कम ये तो पता लगेगा कि आपका जो डॉक्टर है वो कितना काबिल है। एक तो ये, सर दूसरी जरूर मैं चीज, करवा दूंगा सर। हाँ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज, विषय पे आएंगे हम। एक आप जो है वो लिस्ट जो है वो बनाइए, उसमें जो इनोवेटर्स हैं कोई भी हो अपने यहाँ, जैसे मैंने जो है वो इलेक्ट्रोथिर्दोसोग्राफी या डिजिटल आयुर्वेदा त्रिदोष स्कैनर है या आयुर्वेदा STL का हमने जो है वो किया हुआ है, हेड ट्रंक एंड लिम्स का वो होल बॉडी स्कैनिंग का, या आयुष व्यूज पैथोलॉजी केमिकल केमिस्ट्री की मशीन जो है वो तैयार की है। तो हमारे जैसे कि जो अनिरुद्ध जोशी ने जो है नाड़ी तरंगिणी का जो है वो आविष्कार किया, वो भी उसकी बड़ी यूनिक चीज है। इसी तरीके से और भी बहुत से हैं छुपे पड़े हुए हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। डॉक्टर पवन शर्मा जी, आप बहुत बड़ा काम करेंगे अगर आप एक जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरीके की एक पुस्तिका अगर आप झंडू के बैनर तले और अपने इमामी के और इनके सबके सहयोग से अगर आप उसको सामने लाते हैं और सबको अगर आप देते भी हैं तो वो हर चिकित्सक के पास पहुंचेगी तो कम से कम लोग देख करके उसको मोटिवेट होंगे। आप देखिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है। हमको जो करना है हम तो कर ही रहे हैं, हमको कौन पैसा जो है वो सरकार से मिल रहा है, अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं, चाहे हमने तैयार किया हो या अनिरुद्ध जोशी ने तैयार किया हो या जो दूसरे और उन्होंने सबने अपनी पॉकेट से खर्च किया है। तो कम से कम जो है उनको एक
मानसिक तौर पे जो है वो राहत मिले। आप अगर ये पब्लिश कर देंगे तो किसी पद्मश्री से जो है वो हम लोगों के लिए कम नहीं होगा। तो दो बातें मुझे ये कहनी थी, मैंने आपसे कह दी है। बाकी अब फ्यूचर में जो है कोई अगर बात हुई तो जरूर मैं आपसे कन्वे करूंगा। अब आ रहा हूँ मुख्य तौर पे। तो पैथोलॉजी के बारे में मैं जो भी कहूंगा वो प्रैक्टिकल वे से जो है वो लेकर के चलेंगे, क्योंकि मैं उल्टा सोचता हूँ, मैं सीधा नहीं सोचता हूँ। थ्योरी से जो है प्रैक्टिकल की तरफ नहीं जाता हूँ, मैं प्रैक्टिकल से थ्योरी की तरफ जाता हूँ, तो उल्टी तरफ से चल रहे हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो प्रैक्टिस है, आज पैथोलॉजी का जो है वो है सब्जेक्ट है। तो मैं पैथोलॉजी के बारे में उससे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी के बीच में क्या चीज आ जाती है। जो फिजियोलॉजी है और पैथोलॉजी है उसके बीच में क्या चीज आती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप वात पित्त कफ देखते हैं आयुर्वेद के, तो उसमें वात पित्त कफ के 7 सेगमेंट आ जाते हैं। 7 सेगमेंट्स में जो है वो आपके 7 कॉम्बिनेशन बने, वात पित्त कफ, फिर उसके बाद वात पित्त, फिर वात कफ, फिर पित्त कफ, फिर वात पित्त कफ, ये 7 दोष मिलकर के बनते हैं। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, और ये दीज आर इक्विवेलेंट टू एटियोलॉजी ऑफ मॉडर्न साइंस। इसको हम एटियोलॉजिकल अप्रोच कह सकते हैं। तो इसके बाद जो है फिर आ जाते हैं इनके सबके 5-5 हिस्से। जैसे वात के 5 हुए, प्राण, समान, अपान, ज्ञान, उदान, ये सब आगे उसके भेद। तो ये फिजियोलॉजिकल हुए जा करके, ये इसकी फिजियोलॉजी हुई। ये तो जो फिजियोलॉजिकल एक्शन हुए वो उनकी प्राणापान, समान या साधक, लोचक, रंजक, राजक और ये पित्त आ गए, या फिर जो है वो श्लेष्मन, रसन और ये कफ के जो है भेद आ गए। तो ये फिजियोलॉजी हुई। अब इनके बीच में जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 चीजें आ जाती हैं। कायदे से इनको जो है वो पैथोलॉजी के रूप में मैं इनको मानता हूं और इसको मान्यता देता हूं कि ये हमारे आयुर्वेद की पैथोलॉजी है। और जो हमारे ये 5 भेद हैं, अगर इनमें कोई विकृति होती है तो ये विकृति पैथोफिजियोलॉजी में कही जाती है। इसको मैं कहता हूं कि ये पैथोफिजियोलॉजी है। तो इस प्रकार से जो है वो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये हमारे हिसाब से आयुर्वेद की पैथोलॉजी और इसके समकक्ष मानना चाहिए। जो आपके आधुनिक पैरामीटर्स हैं, उस पैरामीटर्स में इनको लेना चाहिए, और हम इसी में ही लेते हैं। अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, और भी सब लोगों को बोलना है। मैं आपको मशीन दिखाता हूँ। ये मशीन है, ये आप देखिए, ये एडीटीएम है, और ये पैथोलॉजी की हमने जो मशीन तैयार की है, ये उसकी आयुष मीटर है। इसका हमने नाम दिया है, ये आयुष मीटर है। और ये ब्लड टेस्ट जो है वो हम करते हैं इसमें, और अभी आपको रिपोर्ट भी दिखाऊंगा इसकी। तो इसमें जो है वो डायरेक्ट ब्लड लेते हैं। ये देखिए ब्लड है, डायरेक्ट ब्लड लेते हैं, सीधे सीधे ब्लड लेते हैं। और इस ब्लड को ले करके जो ये स्टेज है यहाँ पे, ये दिखाई पड़ रही होगी, ये स्टेज है। और मैं आपके सब सवालों का जवाब दूंगा, मुझे बता लेने दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं यहाँ पर ये सोखते का ये पीस है, ये सोखते का पीस है। और इस पीस को जो है मैं
मैं कैमरा जरा ठीक कर लूँ। हाँ, ये यहाँ पर जो है प्लेटफॉर्म पे मैं इसको रखता हूँ सोखते को, और फिर ये ब्लड जो है वो इसमें एक बूंद मैं यहाँ टपका देता हूँ। इसमें ये टपका हुआ ब्लड है, ये आप देख रहे होंगे, ये ब्लड टपका हुआ है। और ये जो है वो केमिकल हमने डेवलप किए हैं, ये केमिकल्स, ये आप देखें, ये जो है नाइट्रेट के लिए है, और इससे जो और वात के लिए भी है। देख से नहीं ना, इधर जरा देखा, ये है, ये केमिकल्स हैं सब। तो इसको मैं यहाँ पर जो है वो छोड़ देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, और ये यहाँ पर जो है वो इसको 1 या 2 बूंद इसके मैं टपकाता हूँ, 1 या 2 बूंद है। अब ये मीटर जो है मैं चालू कर देता हूँ, यहाँ देखिएगा, इधर ये रेडी टू स्टार्ट आया। अब ये केमिकल्स जो है इसमें एक्ट करने लगते हैं, और ये धीरे धीरे ये इसको काउंट कर रहा है, और काउंटिंग के बाद जो है वो ये जिसका ब्लड है उसके बारे में बताएगा कि इसके नाइट्रेट कितना है। और ये यहाँ पर जो है वो आप देख रहे हैं, ये ब्लड रखा हुआ है। मशीन जो है जरा 3-4 मिनट लेती है इसका। अब ये आ गया, ये वैल्यू बता रहा है 131.81, और जो 671 इसकी जो है वो इंटेंसिटी है, और इसने रिकॉर्ड करने में 35 सेकंड जो है वो लिए हुए हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको यहाँ से आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा पूरा व्यू। ये मशीन जो है वो मैंने आविष्कार की है, और इसके ये केमिकल रखे हुए हैं यहाँ पर, ये आप देख रहे होंगे, ये केमिकल्स हैं। ये केमिकल भी मेरे ही आविष्कार किए हुए हैं, वो सब आयुर्वेद से लिया है, कहीं बाहर से भी नहीं लिया है। और इससे अब मैं आपको इसकी रिपोर्ट दिखाता हूँ, वो जरा देना, हाँ अंदर रखिए ये। अब इसकी आप रिपोर्ट देखिए, ये है, ये हमने जो है एक पेशेंट की ये रिपोर्ट है, ये एक पेशेंट की रिपोर्ट है, आयुष ब्लड केमिकल केमिस्ट्री टेस्ट। ये इसमें आप देखेंगे कि आयुष ब्लड केमिकल केमिस्ट्री टेस्ट ये लिखा हुआ है। अब ये होल ब्लड का है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का है। होल ब्लड से मतलब है जिस समय आप उससे वीनस से आप निकालते हैं 2 मिलीलीटर या 5 मिलीलीटर, तो उस समय जो है वो इसकी क्या रीडिंग रही, प्लेन रीडिंग, तो ये 92.49 इसकी आई है। और जब पूरा टेस्ट कर लेते हैं तो इसके बाद फिर इसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, करीब आधा घंटा लग जाता है इसमें टेस्ट करने में। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इसकी जो है वो ये वैल्यू बताता है। अब इसके बाद जो है जो पैरामीटर्स हैं वो है नाइट्राइट, क्लोराइड, फास्फेट, सल्फेट, आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, कॉपर, अमोनिया, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। कुछ आवाज में गड़बड़ी आ रही है क्या? हेलो, हाँ, आवाज में कुछ गड़बड़ी आ रही है क्या? आवाज कुछ सीटी ऐसी आ रही है। डॉक्टर मदन सर, आपका माइक खुला हुआ है, इको हो रही है। रिस्पेक्टेड मदन सर। हाँ, अब सीटी जैसी आवाज आ रही। खैर, तो ये आप देख रहे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट, ये फैट, ये प्रोटीन, ये अमोनिया, ये कॉपर, ये आयोडीन, ये कैल्शियम, ये आयरन, ये सल्फेट, ये फास्फेट, क्लोराइड और नाइट्राइट। अब इसको करीब मैं देख रहा हूँ पिछले 8 साल 10 साल से, तो मुझे ये लगा कि नाइट्राइट इज इक्विवेलेंट टू वाटर,
नाइट्राइट इज इक्विवेलेंट टू वात, फ्लोराइड इज इक्विवेलेंट टू पित्त एंड फास्फेट इज इक्विवेलेंट टू कफ। अब जब ये तीनों आ जाते हैं तो इसका कॉम्बिनेशन 7 तो बन ही जाएंगे, 4 5 जो 6 7 है वो कॉम्बिनेशन बन जाते हैं इसके। तो ये कॉम्बिनेशन तो बन गए। अब सल्फेट जो है वो हमने रखा है इसको रस की श्रेणी में। रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र इसकी श्रेणी में रखा है। तो सल्फेट इज इक्विवेलेंट टू रस, आयरन इज इक्विवेलेंट टू रक्त। ये जो आयरन का आया हुआ है वो रस रक्त, और कैल्शियम जो है वो अस्थि के लिए इसको जो है इस्टेब्लिश किया है। आयोडीन जो है वो फैट के लिए है, और कॉपर जो है वो इसको रखा हुआ है लीवर के लिए, कि लीवर से संबंधित है या ल्यूकोडर्मा से संबंधित है या हेयर के कलर से है या और कोई चीज है, वो कॉपर जो उसके लिए रिजर्व कर रखा है। अमोनिया को बड़ी आंच से जोड़ा है, जो हमारी बस्ट कह ले या और कुछ कह ले तो ये उससे जोड़ा है। उसके बाद प्रोटीन फैट और कार्बोहाइड्रेट है। अब इनको इसलिए शामिल किया हुआ है कि ये जो हम खाते पीते हैं उसके बारे में क्या चीज हो सकती है, और इसलिए जो है वो सारा का सारा ये पैरामीटर अभी अंडर एक्सपेरिमेंट है, लेकिन जितना भी है वो सब मुझको चिकित्सा कार्य में बहुत सहायता देता है। अब मैं आपको कुछ और मशीनें दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा कैलोरी मीटर है। इस कैलोरी मीटर से जो है वो जितने भी एलोपैथी के टेस्ट हो सकते हैं वो सारे के सारे होते हैं, और इसमें जरूरत पड़ती है ये सेंट्रीफ्यूज मशीन की। ये सेंट्रीफ्यूजल मशीन है, इसकी जरूरत पड़ती क्योंकि बिना सीरम के इस मशीन से टेस्ट नहीं हो सकते हैं, और इसके लिए हमको काफी ज्यादा वो केमिकल्स भी लेने होते हैं। तो ये आप देख लीजिए, ये अगर आप कोई भी जो है फोटो कैलोरीमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके जितने भी टेस्ट हैं, क्रिएटिनाइन है, लाइपिड प्रोफाइल है, लीवर प्रोफाइल है, वो सब इसी से ही टेस्ट हो जाते हैं। और आपको अलग से जो है ये सस्ता भी पड़ता है, और आपको अलग से कोई एनालाइजर की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं इस तरीके के कैलोरीमीटर पिछले कई सालों से जो है इस्तेमाल कर रहा था, पिछले लगभग 40 साल से। तो मुझको ये लगा कि ये हमारे मतलब के नहीं है, क्योंकि इससे आयुर्वेद का कोई लेना देना नहीं है। तो अभी 5-6 साल पहले जब ये ईटीजी आयुर्वेदा स्कैन की मशीनों का निर्माण हो रहा था, तो हमने एक सोचा कि इसमें ये एक जो है वो जैसे आपने देखा ये आयुर्वेद के लिए एक अलग से एक मशीन जो है वो इसकी तैयार कर दी, और इसके केमिकल भी तैयार कर दिए, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो ये तो चल रहा था। अब शरीर की पैथोलॉजी को नापने के लिए वो ये खोल दो बता जरा, ये इलेक्ट्रोफिजियोग्राफी जो तकनीक है वो जरा हैवी है, उसको मैं यहाँ तो नहीं दिखा सकता सर डिवाइस डे 17 को है। अच्छा, आज आप पैथोलॉजी के बारे में ही चर्चा कर दें तो कृपा होगी। ठीक है, मैं अब अपनी बात समाप्त करता हूँ। नहीं समाप्त नहीं सर, आपसे आशीर्वाद चाहते हैं हम। ये आयुर्वेदा स्कैनर है, और ये इसमें जो है वो आपको सब चीजें मिल जाएंगी। एक ये है, और कई एक और है उसमें। ये इसमें हाथ में लगाते हैं, ये इसके जो है वो इलेक्ट्रोड्स हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये बैटरी से चलती है या पावर से भी चलती है, और ये इसके इलेक्ट्रोड्स हैं। तो ये दोनों हाथों में लगाते हैं, यहाँ पर इधर, और एक जो है वो इसका पल्स के लिए है, पल्स डिटेक्शन के लिए। तो वो
ये इसकी बैटरी है, ये बैटरी पैकअप है, और ये इसका जो है वो फिंगर का है, ये फिंगर का, इसमें उंगली का जो है वो ये, इसको यहाँ लगाते हैं इस जगह पर, ये उंगली के इस हिस्से में यहाँ लगाते हैं। और मैं अभी आपको एक लेटेस्ट जो मैंने इन्वेंट किया है और अपने आप उसका उपयोग कर रहे हैं, वो एक है मॉनिटर, वो निकाल रहा हूँ उससे, वो एक मॉनिटर है जो 24 आवर आपको इस बात का पैरामीटर देगा जब आप इमरजेंसी में किसी मरीज को एडॉप्ट करते हैं या देखते हैं, तो उसको, उसके लिए मैंने एक तैयार किया है 24/7, उसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी। अब मेरे हाथ में एक वो काला वाला रखा है अंदर जो वो ले आओ, ये तो छोटी है, वो उसमें रखे है ना। अब मेरे हाथ में एक ये ESR की ट्यूब है, ये भी बड़े काम की है। बाई दी वे जो है वो निकल आई यहाँ पर। अब वो जरा पैथोलॉजी मेरी बगल के कमरे में है, तो वहां कंप्यूटर जा नहीं सकता, इसलिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ESR भी बड़े काम का है। ESR इसलिए जरूरी है कि अगर ESR 10 या 20 है तो इसका मतलब है कि इम्यूनिटी बहुत अच्छी है पेशेंट। अगर 10 है तो बहुत बढ़िया है, अगर 10 से जो है वो कुछ 19-20 है तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। तो इसलिए वो बेहतर तो यही होता है कि इसको 20 तक ही जो है वो 10 तक माना जाए। मैं तो इसको 10 तक मानता हूँ कि 10 अगर है देन पेशेंट इज फिट, उसकी इम्यूनिटी बढ़िया है। अगर 20 तक है, अब लोग मानते हैं उसको 20 तक मानने लगे, मेरा ख्याल है 20 तक नहीं मानना चाहिए। 20 तक केवल जो है वो महिलाएं हैं उनको तो माना जा सकता है, और जितना ज्यादा ये आगे बढ़ता जाएगा, जैसे कि जो है वो HIV के पेशेंट होते हैं उनका बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जो कैंसर वाले पेशेंट हैं उनका तो 80 तक 85 तक बढ़ जाता है। तो ये एक जो है वो प्रॉब्लम होती है। तो मैं साला उसमें रख, 1 सेकेंड में लेता हूँ। नई मशीन है जो मैंने आपको बताई थी, ये उधर रख लिया। जो मैंने अभी आपको बताई थी, मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। ये तो मशीन का दिन सर 17 तारीख को है। आज केवल आप मुझे से पैथोलॉजी के बारे में चर्चा अच्छा करें तो ठीक हमें है, बड़ी कोई खुशी बात नहीं, होगी। कोई बात नहीं, मैं अब ले 17 आया हूँ। तारीख को है वो दिन, 17 तारीख को है। इसकी एक झलक जो है वो आपको दिखा दे रहा हूँ। ये है उसका जो है आउटलुक मशीन का, और ये जो है वो आयुर्वेद मल्टी पैरामीटर है। ये देखिए आप, इसका नाम जो है वो मैंने दिया है आयुर्वेद मल्टी पैरा, और जो वर्जन आप देख रहे हैं ये इसकी स्क्रीन है। ये 2 स्क्रीन है इसमें, एक ये है और ये बाकी जो है वो सब सेटअप करने के लिए है। और इसको जो है वो IIT जो है वो कानपुर और जो हमारा सनराइज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इन्होंने दोनों ने मिल करके जो है वो इसको तैयार किया है, उनके जो है कोलेबोरेशन से। तो ये मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब आपने ये देख लिया सब सारा का सारा। अब इसमें जो एक सबसे बड़ा फायदा है जो मैंने आपको बताया था, वो कहाँ गया वो? अच्छा, ये हाथ में लिए हुए थे ना कागज, वो क्लोराइड वगैरह जितने। तो एक जो है मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। ये मैं इतनी बड़ी एक पैथोलॉजी की मैं रिपोर्ट सबको देता हूँ। ये ब्लड यूरिन और टेस्ट की ये रिपोर्ट है। ये देखिए, ये पैथोलॉजी की है, और ये
एक मायोपैथी का है पेशेंट, बच्चा है, उसकी है ये, प्रतापगढ़ से आया हुआ था, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। और यहाँ मैं जो है वो डिक्लेयर कर देता हूँ कि दिस रिपोर्ट इज ओनली फॉर द हेल्प ऑफ क्लिनिशियंस, फिजिशियंस, डॉक्टर्स फॉर डायग्नोसिस ऑफ द हेल्थ कंडीशन इवेल्युएशन, जो कि एक जरूरी प्रोटोकॉल होता है, वो मैं देता हूँ। यहाँ हमारा उसका वो है। अब यहाँ पर जो है, जो मैंने आपको बताया था कि ब्लड एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो होती है, वो मैं छोड़ता नहीं असल में किसी भी पेशेंट का, तो मैं करता जरूर हूँ उनका, चाहे कुछ भी हो जाए। वो मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि आपको ये मैंडेटरी है, ये तो आपको कराना ही पड़ेगा। तो ये ब्लड एग्जामिनेशन रिपोर्ट है। यहाँ आप देखिए, ये जो हम करते हैं, सीरम ट्राइग्लिसराइड है, सीरम कोलेस्ट्रॉल है, ये आप देखेंगे सब सारा का सारा ये आया हुआ है पूरा। और उसके बाद जो है प्लेटलेट काउंट्स हैं या रेड ब्लड सेल्स हैं, ये सब जो है वो इसमें बताते हैं कि क्या चीज है। तो इससे जो है वो डायग्नोसिस में बहुत मदद मिलती है। इसके बाद ये आ जाता है जो मैंने आपको बताया था, सल्फेट, फास्फेट, क्लोराइड, पोटेशियम, ये सब जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये सारे के सारे ये इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स के हैं। तो ये सारा का सारा जो आप देख रहे हैं, यूरिक एसिड, यूरिया और बाइल एसिड टोटल, ये सब पूरा का पूरा निकाल के उसकी वैल्यू कितनी है, ये सब आपको जो है वो मिलती है देखने को। और इसके बाद ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स में है, ये जिंक का है। जिंक कितना है, स्टेनम कितना है, प्रोटीन कितना है, और फैट कितनी है, जो बहुत से हैं इसमें, विटामिन ए बी सी डी ये भी सब आ जाते हैं, मेलेनाइन वगैरह सब आ जाती, कितने प्रेजेंस है। जो भी करना है आपको वो आप करके जो है वो रख सकते हैं। प्लम्बम और लेड तक का है, आर्सेनिक का भी है इसी में। और फिर इसके बाद आ जाते हैं, ये एक बड़ा यूनिक जो है फीचर हमने जो है वो एक डाल रखा है इसमें, कि इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स का जो इवेल्युएशन है इसमें क्या है, जैसे एंटी इंफेक्शन का है, या जो ये प्रोटेक्ट्स जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन का है, और सेल का जो इम्यूनोग्लोबिन्स वगैरह ये सब। अब ये लाइपिड प्रोफाइल आ गई पूरी, ये लाइपिड प्रोफाइल है। यहाँ पर जो है थायराइड पैनल आ गया, T3, T4, TSH। तो ये सारा का सारा ये जो हमने आपको बताया कि कैलोरीमीटर से ये सब करते हैं। अब आयुर्वेदिक फंडामेंटल्स पे आ जाते हैं। तो आयुर्वेदिक फंडामेंटल्स का जो है ब्लड सीरम फोटोमेट्रिक टेस्ट, इसका नाम दिया है। तो ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बॉडी नेचर, ह्यूमर से टेम्परामेंट, ये सब आ जाते हैं। अब ये वात पित्त कफ का आ गया, इसकी जो है वो वैल्यू आ गई। इसकी एक नॉर्मल वैल्यू हमने सेट की है, हालांकि जो है ये कुछ वेरी करती है, और पिछले एक दशक से जो है वो इसका कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है वो है। अब इसके बाद जो है सप्त धातु का है, इसको मैंने दिया है आयुर्वेदिक पैथोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी और पैथोलॉजी, ये दोनों उसी में हमने दिए हुए हैं। सप्त धातु का जो आज का सब्जेक्ट है, यहाँ तो जो है वात की जो है फिजियो पैथोलॉजी पता लगेगी कि क्या है, किस तरह की है। और यहाँ पर जो है वो आपको रस, रक्त, मांस में मज्जा, शुक्र, इनकी सबकी पड़ेगी। अब ये कैटा वाले प्रोडक्ट आ गए, मल के, मलमूत्र और स्वेद, ये सब आ गए। यहाँ पर जो है वो ओज और संपूर्ण ओज, ये सब आ गए। अब इसके आगे जो है वो हमने और फीचर बढ़ाई इसी में, कि और कुछ केमिस्ट्री में जो है वो क्या हम जोड़ सकते हैं। तो उसके लिए हमने प्रयास किया और कुछ पैनल हमने बनाए इसमें, जैसे कि जो है ये आयुर्वेदा ब्लड इलेक्ट्रोफोरोकेम स्क्रीनिंग रिपोर्ट, ये इसी की ही है, फोरोकेम है, स्क्रीनिंग रिपोर्ट है, पैथोफिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल इवेल्युएशन करके है।
इसे हमने जो है वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का एक अलग से जो है वो तैयार किया कि इसको एक्चुअली में ससेप्टिबिलिटी जो स्क्रीनिंग है वो क्या है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो अब इस बच्चे की जो है वो 80 निकली है। दैट मीन्स कि ये 94 से जो 105 का पैरामीटर है वो इसको जो है वो पार नहीं कर पा रहा, तो ये कम है। इसका मतलब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इसको प्रेजेंट है। अब ये HIV की है, ये नॉर्मल है। ये रीनल किडनी का है, उससे पता लगेगा ये नॉर्मल है। ट्यूमर सिस्ट का है, ये नॉर्मल है। इन्फेक्शन बैक्टीरियल वायरल का ये देखिए 70 आया है। इसका मतलब है कि ये जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो इसको जो है वो इन्फेक्टिव है, ये वायरल वाली है। और ट्यूबरकुलोसिस ये नॉर्मल है। बोन मैरो की अगर कोई तकलीफ है, या टाइफाइड का है, ये निकल आया इसका टाइफाइड का। पोलियो का ये भी निकल आया। इंटीग्यूमेंट्री ब्लड एनालिसिस ये भी इसकी निकल आई, ये तीनों कम है। तो इसका मतलब है कि इसके साथ में ये इसको और तकलीफें हैं। और इस प्रकार से जो पैथोलॉजिकल इवेल्युएशन होते हैं, बाद में जो है फिर हम वो ऑटोमेटिक यूरिन एनालाइजर है, उससे पेशाब भी टेस्ट करते हैं। तो पेशाब में WBC, कीटोन बॉडी, नाइट्राइट, यूरोबिलिनोजन, बिलीरुबिन, प्रोटीन, ग्लूकोज, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ल्यूकोसाइड्स, pH वैल्यू, ब्लड की भी pH वैल्यू निकालते हैं। तो कुल मिला करके ये सब जो है वो पैथोलॉजिकल जो रिपोर्ट है मैंने आपके सामने रखी, जो हमने डेवलप की है। और अपनी क्लिनिक में और अपने रिसर्च सेंटर में जो मैंने इसको डेवलप किया है वो सब आपके सामने रखने का प्रयास किया। और इस पर जो है वो अभी काम चल रहा है। आगे फ्यूचर में हम इसको जितना अधिक से अधिक हो सकता है बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछें। हेलो। हाँ जी सर। हाँ, आप कोई हमारे जो पैनल में बैठे हुए लोग हैं, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो वो जरूर पूछें। जी, आपके आगे जो स्पीकर हैं बस उनके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। डॉक्टर, आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर निशा। बहुत अच्छा लगा सर, लेकिन आपने एक इनोवेशन से आयुर्वेद की पैथोलॉजी को मीटराइज करने की चेष्टा की। रियली बहुत अच्छा सक्सेस हुए आप। विश यू ऑल द बेस्ट सर। नहीं, ऑल द बेस्ट फॉर योर। मैं इसको पिछले जो है वो इलेक्ट्रोथिर्दोसोग्राफी तो करते करते करीब 40 साल हुई गए। और 2004 से लेकर के 2007 तक तो भारत सरकार ने इसको टेस्ट किया। वो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में, और वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा, डॉक्टर लावेकर थे उस समय। और मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूँ वहीं की उन दिनों की, कि म्यांमार की जो है वो आई थी मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर। ये देखिए, ये आपको दिखाई पड़ेगा, वो मैं उनको दिखा रहा हूँ। इसमें मैं हूँ बीच में, वो डॉक्टर भिक्षापति हैं जो डायरेक्टर थे सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट की। और ये देखिए यहाँ पर जो मैं आपको उनकी जो जी सर, जी सर, वो मैं आपको जी जी दिखा रहा जी, हूँ। ये जो है आप धन्यवाद सर। नजर आ रही होगी, ये 27 फरवरी की है 2007 की। ये जी जी पूरा जी। जो है तो अब ये डॉक्टर भिक्षापति है यहाँ पर, ये उन्हीं की। नहीं, मैं अब नेक्स्ट स्पीकर को बुलाना चाहूंगा सर। हाँ ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू वेरी जी जी, मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, रियली थैंक यू वेरी मच सर। चलिए। इट गेव एन आइडिया सर। Request. Now I would like to request Dr. Nisha Kumari ji. Welcome, Dr. Nisha, Professor and Head of the Department of Roganidana and Vikruti Vigyan, Yenepoya Ayurvedic Medical College and Hospital, Mangalore. We would like to welcome you, madam, and we would like to have your views on Ayurvedic pathology. Welcome, welcome, madam.
Thank you, sir. Good evening, respected Dr. Pawan Kr, Sharma ji, Dr. Desh, Bandhu, Bajpai ji. I'm very much amused to see your work, Bajpai ji, all those 5,000-year-old tradition. You have brought it into a technology. I can see years together of hard work there, and you have brought into a form of a machine. I'm really looking forward to see the best use of it, because most of the time, our patients will not have money to get treatment, because most of the fund goes to the investigative procedures, which are very expensive. So in that regard, if we use these machines, which are economical to the patients, it will be a great contribution. Members of Independent Research Ethics Committee, Team Ayush, and dear listeners, thank you for the opportunity to speak on the concept of pathology, which keeps all Vaidyas of all disciplines connected. The disease may give typical or atypical presentations, but the pathology remains the very old and unchanged that is documented in our text. Some diseases are mentioned in Nidanasthana. I hope you can see my screen. In Nidanasthana, if you see, there are only 8 diseases explained, whereas in Chikisasthana of Charaka Samhita, you can see 30 treatment has been explained. And similarly, by Sushruta, in Uttaratantra, more number of chikitsa has been explained. Why is that so? Why there are limited number of chapters for Nidana and lot of chapters for chikitsa? Because the Vyadhi may be aparisankheya, infinite, but the pathology is finite. There are only 8 types of pathology, out of which innumerable diseases will manifest. So that is the concept of pathology in Ayurveda. We have 8 pathogenesis, forms of pathogenesis, mode of pathogenesis, lot of components in that pathology like dosha, which I'm going to elaborate individually. And from those pathology, innumerable diseases get evolved. How is that? From 8 different pathologies, innumerable diseases can be evolved. Let us see. Once again, I want to make sure that my slides are visible to you all. Well, coming to the Nidanasthana of Charaka Samhita, we can see that there are 8 chapters of diseases, the causative factors and some prapti of those diseases, which are arranged in 8 chapters in a particular order. So you have Jara first, next. It is in a particular order only. Why is that Charaka told these descriptions of disease in this particular sequence only? Why Jara is told first? Why Raktapitta is told next? Why Manasika Rogas are told in the last? All are having importance. They are related to each other. There is a purpose of arranging these 8 chapters of Nidana in this particular sequence. So I have tried my level best to bring those pathological concepts in a schematic representation or a diagrammatic representation form. The first disease that is described is called as Jwara. In this, all the inflammatory and infective pathology are included. Jara is not just fever. Jara is not just rise of body temperature. It is all those inflammatory phenomena happening. If inflammation is happening within the physiological limit, we are going to call it as dosha vriddhi. If inflammation doesn't succeed and it becomes infection, then it is dosha prakopa that is causing disease. So here is an example which says, you can see this diagram. I think you can follow my cursor. So this diagram shows about the koshta. And inside the koshta, usually Agni is present in the koshta, is it? And when, because of Agni Dushti, the Ama is produced. As soon as the Ama is produced, the Agni that is present in the koshta gets displaced from the koshta to the shaka. So Ama remains in the koshta. The Agni which was present in the koshta displaces from koshta to shaka. And all the Ama will be getting stuck in the Sweda Vahasrutas, because of which we don't sweat during Jwara, because Ama covers them. And Agni is present in the Bahya Pradesha. That's why we feel our body temperature rise. So rise in body temperature is a feature of inflammation, and if it is even worse than the infection. So what we are supposed to do is, you are supposed to bring back the Dush Agni, which is present in the Shaka, back to the Koshta. So that is only possible by Ama Pachana as well as Agni Deepana. The Ama that is present in the Koshta should liquefy.
When the ama liquefies, those ama which had blocked the Svedavasrutas will melt off. And that time, the Agni that is present in the Shaka will come to the Koshta, and that is how we get back our appetite. So when the Jwara is treated, what is the first sign of Jwara Mukta Lakshana is manifestation of hunger reflex. You get that hunger. So that is what the pathology says. Loss of appetite is the first indication that the pathology has manifested. Bloating in the abdomen indicates that dysbiosis in the gut bacteria has happened and the ama has manifested. So ama is the prime pathology for all kinds of diseases where only Ayurveda has emphasized on. So this is about Jwara, which tells not only the mere fever, but also Amavata, Kamala, Aupasargika Roga, or the infectious diseases. Everything has been included under the chapter Jwara. Even though Amavata, to which we correlate to that of rheumatology, is not explained as a separate chapter because it is a form of Jwara. That is why Amavata is not told as a separate chapter according to Charaka. Now coming to the second disease, Rakta Pitta, which is a hemorrhagic disease. So this is once again the schematic representation that says the Yakrit as a mula of Raktavasrutas. And this is the Dushita Pitta. When Dushita Pitta enters the Raktavasrutas, which contaminates or does the pradoshana of Rakta Dhatu. The combination of Dushta Pitta as well as Dushta Rakta increases the Dravata or overall volume of the Dushta Rakta. So that much volume will be produced in the body so much that there is no space in our body to accommodate such a high amount of blood. That blood now will start discharging from natural orifices of the body, from nose going as Urdhvaga Rakta Pitta and from anorectal as well as urogenital region as Adhoga Rakta Pitta. So you can see the difference between Shuddha Rakta as well as Dushta Rakta as told in Ayurvedic classics, where you are supposed to use that Dushta Rakta and color the put it to the cloth and try to wash it, and if the stain remains, that is Dushta Rakta or Dushta Artava, otherwise it is Shuddha Rakta. Or else there is also a description given that mix this Rakta with Anna and feed it to a dog. And if the dog consumes it, it is Shuddha Rakta, otherwise it is Dushta Rakta. So these were the practices done in those days. But thanks to Bajpai ji, who has invented those machines which says whether it is a Shuddha Rakta or not, we can make that Rakta Pariksha more practical. Well, along with Rakta Pitta, it is not just the bleeding disorder that has been explained. It also tells about the Doshagati. The doshas can move upwards, producing diseases like Urdhvaga Amla Pitta, hyperacidity, vomiting, chardi, regurgitation, Udavarta. So if at all, the Adhoga Rakta Pitta, along with that, it also tells about that pathological diseases which flows away out of the body from the lower orifices. Atisara, Adhoga Amla Pitta, Pravahika, all are those diseases which comes from the lower orifices. So from Rakta Pitta pathology, we can derive the pathology of all these diseases as well. Next, coming to the Gulma. The obstructive pathology is Gulma. Here you can see this is a Koshta, and in the Koshta you have different organs. Koshtanga, all those triangles, circle, rectangle are all different colorless pictures that I have shown here are parts of organs of the intestine, and the one star mark in the orange is that stuck vata, that is Gulma, which is taking a phantom tumor form, which is not going upward or downward, which is moving there itself between Hridaya as well as Nabi, or Hridaya as well as Basti, is called as Gulma. So along with this, Alasaka, Shula, Udara, Arbuda, all those including Anaha, Admana, Atopa, these kinds of pathology can be derived out of this Gulma pathology. So Gulma is that which is produced, increased, and gets stuck in between, cannot move outside, cannot go other way, and it moves in and around the same spot from where it has originated. So obstructive kind of pathology can be explained under the chapter called as Gulma. Coming to Prameha or Atisantarpana pathology. So overnourishment and excessive accumulation happens in this particular condition. Here you can see the Kapha as well as the Drava Dhatus, which are a part and parcel, or the Ashrayi Dhatus of Kapha dosha, gets mixed together. And as Kapha is that dosha which is in Guru form, which is heavy, so according to the gravity, it moves downwards. And as it is watery, these Rasa, Medha, all those are
Dravaguna Pradhana as well as Kafadosha Pradhana. So they move downwards and reach the Basti Pradesha, that is bladder or urinary system. And inside the bladder, these pathological materials gets mixed with the mutra and cause increase in the volume of the mutra and hence gets flows outside. So this is what Prameha is about. In Prameha, there is no increased production of urine. In Prameha, the urine volume increases because the normal urine gets mixed with the other Dushta Dosha and other Dushta Dhatu. So the one which you can see in different colors, those spots are the bad or Dushita Dhatus, which combines with the urine, giving different consistency, different color, different form, and hence gets excreted outside repeatedly in more frequency. That is called as Prameha. So this chapter is being told to explain Staulya, Prameha, and all those Medo Rogas, including the diabetes, what you call in the present day. So Prameha is not only diabetes. Prameha is diabetes plus more. So anything that comes out from the body through urinary tract by increased frequency of maturation is Prameha. Then comes Kushta, all gut to skin disorders, including hypersensitivity pathology, autoimmunity pathology, everything comes under Kushta. So what happens in Kushta is the doshas that is produced in the Koshta will flow outside to Shaka and erupt outside through the pores of the skin. So this Koshta to Shaka Gamana of the doshas, which is an abnormal tract. Usually dosha will come outside through Mukhamarga, oral cavity, you call it as vomiting. The Dushta dosha or the bad humors produced in the Koshta moving in the downward direction along with the anal canal, then you are going to call it as Atisara or diarrhea. But that abnormal pathway where a dosha gets out of the body through the pores of the skin or through glands of the skin, then you're going to call it as Kushta. And this happens when the Dushta dosha takes a sideward movement and it gets erupted in the skin. So every skin disorders, including leprosy, including discoloration, what you call Vyvernia, just simple discoloration, Pidaka formation or the rashes formation, ulcer formation, or any lesion formation in the skin is nothing but the dosha that is coming from the Koshta to Shaka. So all kinds of hypersensitivity or autoimmune disorder with the skin manifestation, the gut to skin manifestation comes under Kushta. The next disease that is explained in Nidana Sthana chapter is Rajayakshma as well as Shosha. So all the degenerative pathology, deficient pathology, destructive pathology, and pathology of terminal sickness comes or are explained under Rajayakshma. So what happens in that? All his the body tissues gets out of the body either by vomiting all that or either by defecating all that. So the humors get deteriorated. The tissues of the body get deteriorated. The overall weight, body weight gets deteriorated where there is wasting. The immunity gets poor and he loses his physical capacity, endurance, at the same time, mental stability. And at the same time, he loses, of course, all the sattva or ojas that is present in the body. And when there is no more ojas left in the body, the prana also gets out of the body. So it is just a deteriorating process. So the process or any disease where there is degeneration, deterioration, deficiency, all such pathology comes under Rajayakshma. So Rajayakshma is a set of pathology that takes the patient to terminal stage from any simple cough to a so-called crave, tuberculosis or wasting kind of disorder. Then at the end, he adds two diseases, which are Unmada as well as Apasmara. So these are psychosomatic pathology. So whenever our Sharirika dosha dushti happens, we are, as Sir said earlier, we are having Vata dosha, which does the function related to nervous system. The stimulation, transmission, transportation, inspiration is all done by Vata. The metabolism, including catabolism, including transformation, including digestion, absorption, assimilation, everything is done by Pitta dosha. The homeostasis, the anabolism is brought about by Kapha dosha. So what happens in the body is when all the Vata, Pitta, Kapha of the body gets disturbed, not only in the body, even psychological level also there is a disturbance.
As you know, the gut-brain axis, whenever there is a dysbiosis in the gut, the elements that are produced by the gut bacteria gets diminished, because of which the neurotransmitters will sense the sensitivity and change the psychological behavior, attitude, everything of the patient. So he gets broken psychologically as well, not only physically. So this is psychosomatic pathology, where you have unmada, there is loss of sensitivity, apasmara, there is what, first of all, there is epileptic seizures. It is followed with loss of memory of the face where there was epileptic seizures. Atatva binimesha, not knowing which is real, which is unreal. Vishada, depression, including anxiety. Mada, intoxication. Murcha, the fainting or the syncope. Sannyasa, the coma. So all these comes under psychosomatic pathology, where the psychological humors get disturbed, and because of which these manifestation of disease happens. So the body humors deteriorates, this will influence the psychological humors, and then the patient may have manifestation of psychological symptoms. So correcting the psychological humor is not sufficient here. You're supposed to correct the physical humors as well, because both are interrelated to each other. That's why, as I said, the dysbiosis of the gut bacteria influences the mind, because those gut bacteria synthesize toxins when in dysbiotic stage. Those toxins through neurotransmitters will reach the brain and alter your sensibility, memory, intellectual, wisdom, tolerance, patience, everything. It disturbs everything. So when you lose that indriya, indriyartha, buddhi, mana, atma combination, you will fail to identify what is right, what is wrong, what is real, what is imaginary, what is whatever it is, everything will be confused. It looks like a intoxicated person, or you are in a dreamland. You don't know where you are, what has happened in the past, what has happened in the future, because there is a dysbiosis in the gut that produced a toxin and that reached your brain, and that caused this problem. So most of us give the treatment here. No, that is not enough. Yes, you are supposed to give treatment here as well, but do not forget to treat your gut. So bring the dysbiotic gut bacteria into normal gut bacteria. Let them start producing the toxins. Let the toxin migrating to the gut to brain get stopped. Then only you get the homeostasis between the psychological humors as well as the physical humors. Always see this together. Why I'll tell you, I had a patient who had this loss of appetite kind of symptom. So we gave Agni Deepana, but this one medicines, we tried to enhance his, digestive fire, all that. No, it was not working. But later we came to know that he had a lot of work stress. So it is because of the work stress, there was diminution in the digestive fire, because of which his general health was deteriorated. Now, what we have done is, first of all, we reduced his stress levels, then we increased his appetite levels, and then, yes, both came together. So the gut bacteria was fine, the gut was fine, appetite was good, and psychologically also he was cheerful. Yes, there you brought a line and you brought the normalcy. So always look into these two. Pathology of mind is not only limited to psychology, it is definitely related to your sharirika doshas also. Do not miss this point. Finally, after all these chapters, let us come to three main concepts of pathology: ama, ashaya pakarsha, avarana. Never miss this, because this is the primary pathology in Ayurveda. Our guru used to say, any Vaidya who knows to identify ama, who knows to distinguish ashaya pakarsha as well as avarana, is the best known physician. Unfortunately, we don't have any, our body is not made up of glass so that we can see whether ama is there or not, or whether ashaya pakarsha has happened or not. No, purely out of symptoms, purely out of manifestation, purely out of anumana or yukti, we just get derived all these concepts. But believe me, so as you said, practice makes perfect, continuously working on this, we do get some instinct as soon as we see a patient. No, this is not ama, this is definitely ashaya pakasha. The sense we get, that all comes out of practice. Now, what happens in ama, you know very well, it is not just indigestion. No. Just saying ajirna is too primitive to call anything as ama. No, definitely not. So all of you might have experienced this. You just take a lunch box to your schools or colleges. So imagine that you have taken rice and dal
to your school, and on that day your friend has taken to you for a restaurant and you didn't use that lunch box. You kept that lunch box in your bag itself. You came home. That day was Saturday, but you didn't use your lunch box. Next day is Sunday. You didn't open your bag. And Monday, when you open that tiffin box, how you feel? The dal as well as the rice. What happens after 2 days? Yeah, you get a lot of stinking smell. It'll be very slimy. It gives you a very, very offensive odor. No, you twist your nose when you see that. Believe me, that's what happening inside your gut. It is there right in your gut, not in front of your eyes. It's not just a tiffin box that has ama. It's your body is having that ama. So that ama is that part which is produced out of improper ahara, agni dushti, dosha combination, all the three. So in gross level also, in microscopic level also. Gross level happens whenever there is agni dushti. Microscopic ama happens or whenever there is dhatu dushti. Whatever it is, this will be the one which is producing different kind of toxins, and these toxins produces different impact for different organs. So ama can go to the joint and produce amavata. Ama can go to the heart and produce heart disease. Ama can go to the lungs and produce respiratory disease. Ama can go to the liver and produce disease like jaundice and all. So that is why most of the diseases, almost all medicines that we use in Ayurveda are for the gut, not organ oriented. Everything moves to the gut, because you remove the ama, then obviously the toxins which are produced in the body are no more, and then you go for target oriented medicines. For example, I would like to say, so the patient is having shwasa or breathing disorders. So what we give usually, so we don't think about bronchodilators or mucolactics or expectorants. Actually, we always think about ama pachana as well as agni dipana. So once ama production in the amashay is closed, after that we see that in the respiratory system, whatever mucus has been produced, that we remove. So first set, we always give the medicines for removing the ama. The second set of medicine, we give it whatever mucolytics, expectorants, bronchodilators, whatever it is. Yes, in case of emergency, you may feel this is a tedious job, but otherwise, this is how we give an approach to the patient, because ama is a pathology and shwasa is the manifestation. Then comes ashaya prakasha. It is instigated bodily humors. So you say that. So there is normal functioning of vata, normal functioning of pitta, normal functioning of kapha. There is health. Normal functioning of vata, transmission, transportation, all the movement, mobility, all that is vata. Transformation, metabolism, all that is done by pitta. Homeostasis, immunity is brought about by kapha dosha. This is what we do. So now among these three, pitta as well as kapha is doing normal work, but the vata got agitated, instigated. Now this instigated vata carries the pitta from the normal side and pushes to the abnormal side. That is ashaya prakarsha. So the pitta that is present in the yakrit or liver, it will be dragged from the liver and it will be put to the tvak or the skin. What is the result? Kamala. Jaundice. Shakashita Kamala is nothing but ashaya prakarsha. So what is the treatment over here? Reducing pitta is not the line of treatment. Absolutely not, because pitta is fine. Pitta is in the normal state only. What has increased is vata. So reduce vata there, not pitta. The symptoms are pitta related. There will be pitatva, yellowish discoloration, daha, burning sensation. All that is pitta vriddhi lakshanas. But again, if you give pitta hara chikitsa, it is of no use, because that is not the pathology. Pitta vriddhi is not the pathology, hence that will not work. What is the pathology? Vata prakopa is the pathology. Prakopita vata has taken the pitta from its normal side and driven it elsewhere. So you should tell vata to bring back the pitta, what was there elsewhere, to its normal side. That is the chikitsa. So that kind of pathology is ashaya prakarsha. Ashaya prakarsha is a variety of pathology. So vata can take kapha from its normal side and throw it elsewhere. Here, chikitsa is not to cure kapha, chikitsa is to cure vata. So this is what ashaya prakarsha is about. The symptoms that is manifested is not actually the pathology behind it. The pathology is something else. So many of the time, ashaya prakarsha is the one which plays with the physician. This is a trick what the disease plays and fools the physician many of the times. Avarana, very, very complex form of pathogenesis where one dosha influences other dosha.
So Vata, as I said, it has got its own aura, its own quality. Pitta has got its own aura, its own quality. Kapha has got its own quality and functions. Now, if Vata influences Pitta to do work like that of Vata, then what happens? This is what Avarana is about. So Vata is the one which says, Mr. Pitta, this is not how you should work. You should work like me. So Pitta will forget the work of metabolism, which it has to do. Pitta will forget the work of transformation, which it has to do. And Pitta will again behave like Vata. So both of them will combine together and produce disorientation. So this is what Avarana is. Now, how to treat such conditions? Again, you are supposed to give treatment for Vata here. Vata should stop influencing Pitta. Let Pitta be as Pitta and Vata be as Vata only. So this is the pathology you should understand to clear Avarana. So Avarana Chikitsa is to stop influencing. Many a time we get influenced. So there will be some speaker, he'll be talking this, that, we get inspired, we get influenced, and we start behaving like him, knowing whether he is right or wrong. Many times we see this social media people getting highly influenced by these kind of speeches. Well, this is what negative influence is about. I'm talking about negative influence. Of course, there are so many people who inspire us. We should get inspired from good people. So what is positive, what is negative, we should know based on our yukti here also. So the dosha get negative influence, and the Vata gives negative influence to Pitta to act like self, non-self. Otherwise, what is the function of Vata? To coordinate all the functions, to see that all the system is working properly, they're interacting properly, exchange is happening properly. Yes, that is the function. Instead, if Vata is confusing others, rather than working as a coordination, if they're confusing them, then there is a dysbiosis. So this is the negative influence created by Vata that has to be stopped. And that is the pathology of Avarana. So you have different, you are supposed to differentiate between the cause and the pathogenesis. Nidana is different, Samprapti is different. So Nidana is Aharaja, the foodborne, Viharaja, lifestyle related, Manasika, psychological, Kala, the season or age of the patient, Karma, yes, only Ayurvedic concept believes in Karma Phala Siddhanta. The disease like Kushta, Shvitra, Pakshagata are all out of Dushta Karma done in the previous life. So that comes back in the form of dosha dushti. Daiva, which is supernatural, environmental, seasonal, the cosmic influence, all that comes under Daiva. So this is all Nidana actually, not the Samprapti. The Samprapti is only these forms, Vriddhi, Kshaya, or Pradosha. Vriddhi is qualitative and quantitative increase of the dosha. Kshaya is qualitative and quantitative decrease of dosha. Now what is Pradosha? What is the difference between Pradosha and other two? I will give you a small example. I hope I'm not taking much time. Please tell me if I'm extending too much. Yeah. Yes, take a glass and fill that glass with half glass of milk. Okay, take a glass and fill it with half of milk. Now pour more milk. Go on pouring, go on pouring, go on pouring. What happens? The glass gets filled and milk will overflow. This is nothing but vriddhi. It increases. Now, other ways. So there is a glass which has got a milk in it. Now spill it off. Now glass is empty. What is that? That is kshaya, qualitative decrease. There is no milk in the glass now. Kshaya has happened, decrease has happened. What is pradosha? There is a glass and in the glass there is a milk. Add 2 or 3 drops of lemon juice. What happens? There is complete change of the quality of milk into something else. Okay, the milk breaks down, doodh phat jata hai. So that is what pradosha is. So decrease in the quantity is vriddhi, kshaya, increase in the quantity is vriddhi, and complete change in the quality and rottening of the originality of that compound is pradosha. So these are the 3 pathologies. So if there is vriddhi, you're supposed to decrease it. If there is kshaya, you're supposed to enhance it. If there is pradosha, you're supposed to purify it. So pradosha opposite, prasadana. So many a times you might have heard about the word rakta prasadana, tvak prasadana. That medicines are the one which clears pradosha. Okay. So even in dosha also, you are having hrishta dosha, utklishta dosha, and leena dosha. Hrishta dosha means that which gets stuck. It is there inside, but it is getting stuck. Utklishta, that is already in the verge to move outside. Leena dosha, it will keep quiet. And when the conditions permit, when the immunity is low, that time the pathogenesis will explode. The best example is Vishamajvara.
You have seen in Vishamajvara, sometimes there is fever, no fever. Fever, no fever. There is episodic. Grahani, there is symptom, no symptom. Symptom, no symptom. Apasmara, epilepsy, no epilepsy. Epilepsy, no epilepsy. Why is that manifesting in episodes? Why it comes in episode? Even Tamakashwasa, bronchial asthma, that also comes as episode. What happens between episode and non-episodic phase? That is what Leena dosha is. So Leena dosha, the toxin is there in your body, but it will keep quiet. It is so weak that it will not express its symptoms. As soon as the patient eats something that suddenly provokes the dosha that is quiet into something very massive, that time the symptoms will explode, and that gives you episodic phase. One small example. I am having grahani, that means irritable bowel syndrome like symptom. Of course, it is not exactly IBS, but still I'm telling. So I am just having no symptoms now. Now so I just took some junk food outside. So what happened? Those doshas which were leak exploded outside and starts manifesting. The same happens in case of infective disease, including the present pandemic also. So the disease will not affect you as long as your immunity is good. So when your immunity goes down, that time when the virus enters, the symptoms will explode. So I personally relate the present pandemic to that of Leena dosha concept and link it to that of Jvara, Upasargika Roga. So this is what Leena dosha is about. So overall, if you sum up, inflammation and infection is one set, obstructive or neoplastic disease is another set, destructive and degenerative pathology is third set. So inflammation or infection is Pittaja variety of Samprapti, neoplastic as well as obstructive is Kaphaja variety of pathology, destructive and degeneration is Vataja variety of Samprapti. Okay. And finally, so we have 8 branches of Ayurveda. All those are based on Samprapti, where Kaya Chikitsa explain the general and systematic pathology of a particular organ as a general way. Well, there is nothing much to describe in that. But Kaumara Bhritya, special form of pathology manifests exclusively in pediatric group. So krimi, intestinal worms, there is high tendency of development of this in young children rather than adults. Well, there are such set of diseases which are very particular in pediatric because of their age and body structure. Coming to Graha Chikitsa, very, very unique one. Unfortunately, this particular branch of Ayurveda is getting vanished because people want something like science, evidence based on that. We are really we ourselves are putting out this disease because paranormal science, psychological, microbial, environmental disease, all this, there are many times we can't describe the pathology. It's a very, very sensitive branch of Ayurveda, what we call it is Bhuta Vidya. So I just want people to focus on Bhuta Vidya and bring back this science because it is one of our strongest assets where no other system of medicine has mastered. Shalakya, the inflammatory, infective, neoplastic, traumatic, and degenerative disease of head and neck. Shalya, traumatic, neoplastic disease pathology that requires surgical intervention. Agadatantra, the inflammatory pathology derived from toxins and poison. Now, Rasayana, the prevention and cure for the disease of degenerative pathology. Moreover, Vajikarana we have. Many times we think that it is just to increase our sexual drive or something like that. It's absolutely not so. Not all Vajikarana. Why? Otherwise, it would have been a part of Kaya Chikitsa. Why separate Vajikarana branch has been evolved? Because it is not only for prevention and cure for the disease of degenerative pathology, but also the reversal of the pathology by giving cell repair. The cell repair can be done by Vajikarana. The regenesis, the one cell is already dead, to bring back that new cell is possible by Vajikarana. We are not using this in Kaya Chikitsa. Always make a practice that after you treat, once a Shodhana is done, as Balya and Rasayana, please add Vajikarana Dravyas also. Why? Because Shukra is a Dhatu which is present in 2 forms, Sthanika as well as Sarvadaika. What is the function of Shukra? It is to give rejuvenation and repairing. The Sthanika Shukra is the one. The Sthanika Shukra is the one which is related to the sexual reproduction, whereas Sarvadaika Shukra, so every cell in our body has got the provision of mitosis and meiosis kind of division. So this cell division or cellular reproduction in our body is brought about by Sarvadaika Shukra.
So Shukra doesn't always means a reproductive, sexually reproductive tissue. No, it is reproductive tissue, but generalized also. So you need that rejuvenation. That is why Shukra Dhatu should be enhanced. So once this Shukra Dhatu is enhanced, you need to enhance the previous 6 Dhatu also. So these 6 Dhatus are enhanced, Shukra Dhatu is also enhanced. Now why? Because Shukra Dhatu enhancement causes enhancement of Ojas. Yeah, according to Sharangara, the Ojas is derived from Shukra Dhatu. And what does the Ojas do? Ojas is the one which enhances your immunity. When you have good immunity, yes, you can be disease-free and you get that resistance power. So this is the beauty of Vajikarna, which can be totally preventive and which can correct any pathology in your body after you cure the patient. So once the disease is cured, I understand, the patient will be free from symptoms, but the body is still wrecked. The body is still broken. The body is still damaged and it needs a repair. And that repair is done by this one. And you have various kind of chikitsa just based on pathology. As I said earlier, whenever you identify enhancement of body humors, I won't use the word enhancement, exaggerated body humors, you have to pacify them. That is shamana, alleviating chikitsa or alleviating treatment. Whenever there is agitation of the body humors, prakopa, elimination, shodhana is a line of treatment. Whenever there is diminution in the body humors, kshaya, balya or rasayana or enhancement is the treatment. Pradosha, when you see, I told about milk and lemon example. So there you are supposed to remove that bad element that is accumulated and enhance the quality, that is dhatu prasadana you are supposed to give. So in Kushta, as I said, there are so many herbs that are prasadaka. So you have karela, that is blood purifier, that is tvak prasadakara. Panchavalkala is a tvak prasadakara. Manjishta is a blood enhancer. So blood purifier, blood enhancer, both are different. First, you're supposed to purify the blood and then you're supposed to enhance the quality of blood. Same you are having in case of Shukra also. Shukra prasadana, Shukra vriddhi is also there. Shukra pravartaka is also there. Same you have in Mutra also. Mutra vardaka, Mutra sravaka. So Gokshira, Punarnava, that is a difference. So that is how you're supposed to know what is the avastha of dosha, understand the pathology, then you can select the medicine or the herb likewise. So this is my last 2 slides. So that is how the disease will manifest in your body. So first nidana will happen. Because of this nidana, dosha, that is before body humors gets disturbed. And when these humors get disturbed, your body tissues also gets disturbed. And because of this, the gut bacteria or the digestive fire gets disturbed. Whenever there is a dysbiosis in your gut, the toxin called as ama will be produced. Now this ama will combine with body elements and produce all sorts of symptoms. But before that, whenever the ama is produced, there is something called as immunity in your body. It will try its level best to fight against this ama. It will try its level best to resist the next proceeding of the disease. And if immunity wins, if the Vyadhikshamatva wins, the swastha is the result. But if immunity fails, yes, the disease continues to proceed and it travels all over the body and it will reach the target organ. Then only it will give the disease manifestation. There are 3 doshas in our body, Vata, Pitta, Kapha, with 3 forms of dosha dushti. What is that? Vriddhi, Kshaya, Prakopa. Sometimes Vriddhi, Kshaya, Pradosha, both are also there. These 3 doshas, in any of these 3 dushti, causes dushti of Sapta Dhatus, 7. That is also in 3 forms. What are they? Vriddhi, Kshaya, Pradosha. Doshas also Vriddhi, Kshaya, Pradosha. Dhatus are also the same. So now think about what may be the permutation of and combination of these 3 dosha, 7 dhatu, 3 forms, isn't it? Now this Murchita dosha with Dushta Agni forms ama. Well, now ama will circulate all over the body and go through all the 13 varieties of srotas and produce 4 types of srota dushti. What are they? Atipravritti, Sangha, Vimargagamana, Siragranthi. Overflow, obstruction, then venous engorgement or diversion to the abnormal pathway. These are the 4 srota dushti prakaras. Or in the other way, ama will move in any of these 3 doshagati. What are the 3 doshagati? Urdhvagati, moving upwards. Adogati, moving downwards. Tiryagati, moving sideways. Taking any of 3 roga marga. What are they? Bahya roga marga, skin manifestation. Madhyama roga marga, musculoskeletal disorders.
Abhyantara Roga Marga, the disease is related to internal organs. So these are then, if at all, if the doshas are there in the internal organs, Abhyantara Roga Marga will be chosen. Diseases like vomiting, fever, loose motion, that kind of symptoms will be there. If the ama goes to the Madhyama Roga Marga, musculoskeletal disorders like rheumatoid arthritis, osteoarthritis, gouty arthritis, vascular diseases, this vasculitis, Dept, DVT, these kind of diseases will be seen. And if at all, if the doshas reaches the skin or the skin manifestations in the form of discoloration, eczema, rash formation, ulcer formation, oozing out, or plaque formation, all that things you can see. Once it reaches the target organ or ashaya, the selection of target organ depends upon the Kavai Gunya. So, Kavai Gunya, what is Kavai Gunya? So, Kupitanam hi doshanam sharire paridavata. It will keep on moving, going on finding, where shall I settle? Which one? The dushta doshas, the bad humors will circulate all over the body and it will find one place. Now, how it will select a place? That is Kavai Gunya. It may be structural abnormality or functional abnormality directly related to the genetic disposition. If we have a gene that causes or that triggers the manifestation of the disease, obviously that disease will be seen. For example, if the patient is having the tendency to develop cancer, cancer will anyhow manifest, but it needs one triggering factor. Now, if he smokes, now smoking becomes the triggering factor and the patient will get cancer. If the patient doesn't have that particular gene, even if he smokes, probably he has got less tendency to develop cancer. So this is what genetic predisposition favors the manifestation of the pathology. And the disease starts manifesting. The disease continues to manifest and takes more aggressive and complicated form till there is an intervention by a Vaidya. So it depends upon where the Vaidya intervenes. Has he intervenes in the very initial stage? Yes, success rate of treatment is very high. Has he reached the advanced stage? Yes, the disease curing is very, very less. So all these are depending upon when the Vaidya reaches, when the Vaidya identifies, how the Vaidya or how fast the Vaidya understands the pathology, how well he selects the medicine in accordance to the pathology. This is what is totally related to the yukti of the physician. This is explained by Sushruta in his Kriya Kala. So with this, I would request all of you to think a little bit different in Ayurveda. Say, for example, we hear a lot of stories in Ayurveda. Say we heard that Jivaka, Vruddha Jivaka. So he has written Kaumara Britya. Nobody accepted it. He dipped inside the river Ganga. He came outside as an old man. Now, what do you think this disease is? What do you think this situation is? This is nothing but the first ever described progeria in Ayurveda. So that is how I see. So when we see Sannipataja, where classified disease, Sarvataja, Pittaja, Kaphaja, Sannipataja. Every time we see this, what is this Sannipataja? Sannipataja is nothing but malignancy. Every simple disease getting converted into malignancy is Sannipataja. Every Sannipataja variety is nothing but malignancy form. So please think in this way, and this quest for Anvesha should continue. Then there are chances of a newer and newer concept that gets evolved, better understanding of science happens, and as Bajpai sir has designed many devices, we can design many more devices if we understand some pathology or some prapti in this way. With this, I would like to thank the organizers for giving me the opportunity. I'm sorry if I have extended too long. I'm very sorry, sir. And I thank you once again. And I'm more happy to share more about this particular concept with your questions. Over to the organizers. Jai Mahadevi, Jai Mahadev. Do you breathe in between the lecture? Excellent, excellent, great. Thank you, Sharma ji. Agnihotri ji, we are really having blessing with Mahadevi. Yeah. Undoubtedly, yeah. Thank you, sir. Thank you. Thank you. So for comment, now I would like to request Professor Madan Thangvelu sir. Professor Madan Thangvelu sir is from UK, genome biologist and in Cambridge. So he is joined from Cambridge and he is blessing this Ayush Samriddhi platform right from the beginning. Namaskar. Hello. Pawanji, namaskar. Thank you so much. Namaskar. I don't know if somebody else has wanted to comment before me. Sudhakarji, I don't know if you wanted to say something or shall I proceed? Pawanji, both
our both presenters gave us insights into different dimensions of the human body in health and disease. And जैसे आपने बताया, Nisha Kumari didn't take one breath in between. So this was just like listening to Alaraka or somebody playing the tabla, you know, it's just this flow of music. So thank you. शंकर महादेवन का था, हाँ, इसीलिए मैंने महादेव भी बोला सर. डमरू जैसा चल रहा था. Breathless. शंकर महादेवन ने breathless बनाया था. So I wanted, Mahadevi of Ayurveda. Pawanji, if with your permission, for me, listening to both of them were like sitting in the most difficult class trying to understand. So while Bajpai ji was talking, I was putting some notes down, but I was completely mesmerized by Nisha Kumari's, and it has clarified some thinking. So if I take just a few minutes to share one or two slides, particularly this concept, I want to highlight the concept of dysbiosis. And Dr. Nisha Kumari has given us some information. If I just share 2 or 3 slides, then it will, an opportunity for us also to discuss this a little more about the pathology. So I have a large stack of slides here, but I just want to just put it in the context of what we just talked about. And in terms of this, what we talked earlier about COVID, everything is running in the context of COVID these days. And here is a comment that this new variant might have a milder pathology. And how do we understand this pathology in terms of Jwara, which Nishaji has just touched on, and whether we can put all that we have learned today in terms of gut dysbiosis or any kind of dysbiosis and the immune system, how did they connect together? So Bajpai ji gave us a way of measuring these things. And he says, you know, pathology can be studied by understanding abnormal biochemical markers that can be assigned to different dhatus, etc. And the dysbiosis can be in the gut as presented here, and that dysbiosis could lead to nutritional imbalance, and that is shown in this image. I'll just put this up on the full screen so that you can see what is the connection here between gut microbiome and all the minerals that vitamins, minerals that Bajpai ji was talking about, how dysbiosis leads to imbalance. So there is a connection here, which is a very clear connection. Acha, dusri cheez is a very exciting connection between dysbiosis and avarna. I hope, Pawanji, I hope my slide is moving. This is the 3 A's of primary pathology. And I want to just touch very briefly on one aspect that connects with Nasya and Neti. Particularly your slide number 4 is visible. Visible. Ek minute. Let me just. Can you see this slide? 6, yes. Pawanji? Yes, sir. Yes, sir. Acha, 6. 6. So this is a study going on here. Ki, when you do Jalneti and Nasya, how will it help you withstand COVID-19? How do you get this resistance to COVID-19? And the connection is the microbiome in the nasal cavity. Pawanji, aa gaya ki nahi Austria walon ki slide? There is a connection between the nose and the brain, the nose-brain axis. And is the mechanism of dysbiosis the same also for the nasal microbiome? So this is a very important question. And these researchers, along with researchers from University of Perugia in Italy, are talking about the structure called the nasopharynx-associated lymphoid tissue. Just in the back of the throat, there is a section where there is a lot of interplay going on between the immune system and the microbes. And when we look at this a little more closely, this is what we find. We find
dysbiosis in this area where there is microbiomes. If we have imbalance in the bacteria, then it leads to unhealthy immune system in this lymphoid tissue here, and this gives a break in the armor for the virus to replicate and cause problems. Now, when we look at the biochemical pathway here, we can connect all the things, the two talks that we had today, my feeling, we can connect the two talks here. And you will see that this pathway, when we look at the proteomic metabolomic characterization of the patient sera, we find major difference between COVID patients and normal people. So this is an assessment that can be done using Bajpai ji's instrument. You can measure the sera that he has shown us, you can measure imbalance there. But how does it connect to dysbiosis, and how does it connect to Vyadik Shamatva, and how does it connect to susceptibility to this disease? That is shown in this pathway here, where a single amino acid, tryptophan, which is the founding amino acid for making serotonin and melatonin, there is a branch enzyme here called tryptophan dioxygenase or indolamine. Slides are not moving. Slides are not moving. There is a problem with. Yes. Acha, pisle, it said the slide before this was, I don't know why the slides don't move. Could you see this one earlier, Pawanji? Yes, So, yes. you saw this one. There are microbes here in our nasopharynx. They talk to this NALT, the lymphoid tissue here on the back of the throat, where there are a lot of resident immune cells. If this microbial imbalance, if there is a dysbiosis in the microbes here, that influences the health of this tissue, this lymphoid tissue. This is a very confusing story. How can, so the three clues, neti, nasya helps, but what is the connection? How does it all tie together? A little bit of the evidence comes from understanding patient sera. Bajpai ji has shown us how to measure patient sera, how to measure micronutrients there, vitamins, minerals, etc. And Dr. Kumari has shown us about dysbiosis. Now put it in the context of the nose, and you see something quite amazing, which is how this pathway and how this interaction comes about, and how we can see some aspects, maybe a little bit of avarna somewhere there. And this is the fine biochemistry here. The microbes are producing all these compounds, indole, scatol, tryptamine, etc., etc. And the host cell is also producing similar compounds. They all come from the same pathway. So they are all interacting in this tryptophan pathway. And there is a signaling process between these chemicals, which is a mixture of the microbiome and the host cell, that talks to the immune system in that local area. And you can see all these genes that are turned on, interleukin 6, interleukin. What we have is this amazing example. My question yesterday was, how does Anuthaila work? You know, when you say Anuthaila for nasya, how does it work? How do you make this? How do you make this very amazing formulation? How does it work for preventing COVID and also maybe helping with treatment of long COVID? So there are many clues that are coming through today from our brief talk. The other point I want to touch briefly is about the marma points, you know, and how all of this comes together beautifully. When you do nasya and you are managing microbes, then you are preventing, possibly preventing some kind. And we know from our marma understanding that there are certain marmas that are very, very important. And we can bring all of this together into a very nice scheme. And I think what we have today is the start of this thinking. So I want to thank both the speakers, Pawanji
I want to thank Bajpai ji for showing us how to do very inexpensive ways of measuring blood biochemistry, pathologies, and also to Nisha Kumari ji for taking us into appreciating better how Charaka Samhita has organized the different conditions and what is the deeper meaning in how it is organized in that structure. So my approach this is to come to it from the molecular biology perspective and the microbial perspective, and to see how we can bring all of these things together so elegantly. So thank you so much. I feel what we have achieved today, at least for me, my Nisha Kumari ji's presentation has put some more details that I was looking for, and I am now able to connect many things. Dysbiosis in the nasal cavity and how that leads to imbalance, and anything that touches the HPA axis is surely going to upset the entire physiology. So there are many insights that are coming out, and understanding, for me, my next step, I suppose, would be to understand the Kriyakala aspect of this Jwara, you know. I would like to see some of us perhaps sitting together, just discussing very closely, how do you understand, if it is Sannipata Jwara in this instance, how do you see the different locations where you have dosha destabilization? You know? Whether it is in the entry point of the virus via the nasal, and then whether there is dysbiosis there, or whether there is something else that is happening there that leads to later pathology, you know, going through the Kriyakala stages. So I feel there is something here that we can start to put very firm hypothesis and start to refine the structure to come up with some innovations. Whenever I show Anuthaila formulation, I'm saying it's a very complicated formulation. Do we need all these herbs? There are about 27 herbs there in Anuthaila. Do we need all these herbs, or can we trim it down? CB Jaji, if he was here, he would say just use mustard oil as a standard procedure. Some people might say just use sesame oil as a procedure. But what is the science behind this? You know? How do we understand the science behind this? How can we use the insight from Ayurvedic thinking to refine the science and to improve formulations for the 21st century and beyond? So I leave it there. Pawanji, thank you again for the chance to sit and listen to both Bajpai ji and also Nisha Kumari ji in such detail, and also challenging to refine the thinking here a little bit. So, Namaskar ji, thank you. I wait for comments from our other esteemed guests here with us. Now, session is open for discussion and any questions, support, suggestion. Welcome all. If anybody would like to suggest before concluding. I have requested Sudhir Baggaji to join us from America. I don't know if he is with us today. Name, sir? Sudhir Bagga. Sudhir ji is not here with us. Sudhir ji has joined us in one occasion before. Today both presentations were ready, sir. Ready, sir. Welcome, sir. P. Sudhakar, ready, sir. One last request, Nisha ji, I would like your contact details so that we could, if you put that in the chat box, I would deeply appreciate it. Also, Sure. Bagaji ka bhi agar number le leं. Sure, sir. And I'll just would like to thank Dr. Nisha ji, I want you to comment on my thinking about dysbiosis in the... Sure. Hello, sir. Doctor, ready, sir. Hello, sir. Yes, Nisha ji, we can hear you. Sir. I didn't get your last. To you. Madan, sir, I just didn't get your last. My last, Nisha ji, I would like you to comment a little bit on the microbiome, the nasopharynx microbiome and dysbiosis. I will send you all the papers,
there is a Sure, sir. major dysbiosis here in the nasopharynx, and Yes, sir. we Yes, sir. see there is a correlation with air pollution, Sure, particularly sir. those particulate matter of about 2.5 microns. If there is a high incidence of those particles that comes from diesel fuel exhaust, then it causes dysbiosis in the microbiome here. Here is, I think, Nishaji's Dupana, and this is very, very interesting what you are offering here. Thank you. Yes, sir. Am I audible, sir? Yes, we are. We can hear you. Before that, I would like to thank my guru, Dr. P. Sudhakar Reddy, sir, because he was the one who identified the orator in me. He was the one who fought with my parents to continue my profession as a teacher as well as orator. My parents weren't that much interested me in getting involved into this kind of talks and all. I still remember he fought with them and let me get participated in allocation competition in Bangalore. And that was the first day when I stood up in front of the mic. And even today, have not stopped. It is all because of him, sir. We need such teachers who have inspired students like me, and no, not all teacher does this. If I'm talking today with this confidence and whatever, it is because of Sudhakar Reddy, sir. So thank you, sir, for that day. I still remember the date, and that brought me till here. Thank you, Reddy, sir. Reddy ji, namaskar. Madan sir, we have done one small research on Dhupana on indoor microorganisms when I was working in SDM Hassan. So we just took Haridra, Nimba, Sarshapa, Tulsi, Kaidari. These are the 6 herbs, and we have burned this. And we have taken the air sample and checked the microbes before Dhupana and after Dhupana. And out of that, we got these results. And meanwhile, we have checked this on nasal as Dhumanasi as well. So with that, we have brought out some of the informations how this nasal microbes do work on both variety of resisting the infection passing on from upper respiratory tract to the lower respiratory tract. So why our acharyas have told about 3 varieties of nasya, one in the form of taila form, one in swarasa form, one in powder form, and one in dhuma form. So why? Because those active principles will resist the entry of microorganisms in different ways. Not only that, it will activate our immune system. So what Dhumanasya does is just destruction of the microbes which are airborne that has just entered the upper respiratory tract. Whereas Anutaila, it not only resists the entry of microorganisms, but also activates the inflammatory process, activating the molecules, triggering the immune process or as well as inflammatory process, stimulating the cytokines and liberating the lysosomes, and those lysosomes that comes from the immune system and reach the local immune area, and there will be an antigen antibody reaction, and that is how Anutaila resists the progress of disease. So Nasya in the form of Swarasa, Nasya in the form of Dhuma, Nasya in the form of powder just resist by destroying those microorganisms in the local level by direct destruction, by action of proteolysis of the organisms that has entered. Whereas Anutaila does in more deeper form, where it reaches, stimulates the brain to activate the immune system to produce more number of mast cells, and they begin the inflammatory response. So that is the difference between Anutaila Nasya and Nasya with other materials. And as you know, so those we have goblet cells that secretes mucus and traps the physical foreign bodies, and that can be done by powder Nasya as well as Dhuma Nasya. And that is why a lot of mucus secretion happens. So along with that, so you can see you have different kinds of granule cell and all that. So what actually it does, here there is a requirement of olfactory epithelium as well. So that is why Vacha, what we call it as Ugragandha, as well as Apamarga Nasya,
Lashuna Nasya are also being told. But yes, you need lot of tolerance capacity to withstand the corrosiveness of Apamarga as well as Lashuna. Most of them do not practice. Maximum we do Gudardraka Nasya, and that is also in some sensitive people we cannot do it because they cannot tolerate it. But olfactory epithelium stimulation is also required for triggering the immune mechanism. That is why Ugra Gandha or Gandha Dravyas are used for Nasya. And of course, the stimulation of ciliated cell, brush cells, goblet cells, secretory cell, and these are also very much essential to wash off the physical impurities as well as the debris of inflammatory responses at the end of successful inflammation. And this is what it does. You have the triggering mechanism of inflammation where there is activated mast cells, and that will again promote the secretion of different WBCs. They reach the target area and then encroach the antigen. Then by nucleosidic action or the proteolytic action, they destroy the antigen, and finally inflammation becomes successful. And if it turns infectious, now in that level, maybe Thaila intake may not be advisable because Thaila base is not much supportive for infectory form of pathologies. So they for the sake of removing those inflammatory debris, it is better to go with Dhumanasya or Swarasanasya. So this is what the different types of cells you have: basal cells, ciliated cells, which is required for various kinds of inflammatory response, which are triggered depending upon the type of nasya. So one of the nasya is Anutaila nasya, what you told, so which does more deeper form of action, whereas the dendritic cell activation as well as ciliated epithelial cells are activated by the Duma as well as Pradhamana nasya varieties. Whereas all these cells, what you have seen, will get activated by Anutaila nasya. That is the supremacy of Anutaila nasya in comparison with that of other variety of nasya. Thank you. Thank you so much. Wonderful. Now, I have, Pawanji, one question to Bajpai ji. Bajpai ji, namaskar ji. आपका म्यूट अनम्यूट कर दीजिए जी, थोड़ा आवाज नहीं आ रहा जी. Now you are listening me? हाँ जी डॉक्टर साहब, आपने जो एक चीज बताया, वो स्किन रेसिस्टेंस ESR, एक शब्द आपने प्रयोग किया जी. हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताना जी. और एक हाँ जी, और एक ESR is actually erythrocytes sedimentation rate. ठीक है. So when you मैं समझ गया जी. जब वो ट्यूब में आप जब ट्यूब में वो ब्लड फिल करते हैं उससे, हाँ जी, फिर उसके बाद रख देते हैं 1 घंटे के लिए. हाँ जी, समझ गया. ग्रेजुएटेड होता है 1 to 100 mm. दूसरी समझ गया जी. 0 to 100 है. Then you see the how erythrocytes are falling below. That rate is counted. Now the अब क्या है कि लोग जो है वो 20 तक उसको मानने लगे, लेकिन मैं उसको 10 तक ही मानता हूँ. बिकॉज दैट इज लुक्स वेरी लॉजिकल कि जो ब्लड के अंदर एनोमेलीज है वो सारी की सारी सामने आ जाए. लेकिन इसके लिए जो है एक और कैलकुलेशन हमने डेवलप किया है अपनी मशीन में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ. ये देखिएगा, यहाँ पर ये दिया हुआ है होल ब्लड और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड. हाँ जी. बीच में जो है वो देखिए जो काउंटिंग है ये यहाँ पर. हाँ जी. ये काउंटिंग जो है जब आप देखेंगे इसमें जो है जो ब्रॉडर है, इसमें जैसे कि इसकी मैं आपको दिखा रहा हूँ 92.49 और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है 111.01. ये आपको दिखाई देगा यहाँ पे. हाँ जी. तो इसका जो वो घटा के जो है जब वो देखेंगे कि इसमें वेरिएशन कितना, तो 10 पॉइंट समथिंग है. तो 10 पॉइंट समथिंग जो है वो ये शो करता है कि इसको जो मेडिसिन चाहिए वो थोड़े मॉडरेट किस्म की चाहिए, बहुत हाई लेवल की नहीं चाहिए. हाँ जी. इसका एक दूसरा जो है वो ये है कि ये होम्योपैथी में भी काम आता है. ये आयुष का मतलब का है. इसीलिए मैंने पवन वर्मा जी से कहा कि आप अपनी पावर बढ़ाइए
और आयुष के जो है जितने भी जो है वो प्रैक्टिशनर है, चाहे वो सिद्ध के हो चाहे नेचर क्योर के हो, उनको आप शामिल करिए और अपनी जो है ताकत बढ़ाइए, क्योंकि आप कर सकते हैं, हम लोग इतने फालतू नहीं है कि ये सब करें। शर्मा जी कर रहे हैं इमामी का काम या झंडू का, तो वो कर सकते हैं, तो उनको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं तो उनको पुश कर रहा हूँ दोनों हाथ से कि वो और आगे बढ़े, और वो आगे बढ़ेंगे तो हम लोग अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। तो ये होम्योपैथी में भी जो है डॉक्टर रेड्डी ये काम आता है, और इसमें जो है वो वेरिएशन देखते हैं। अगर वेरिएशन जो है बहुत क्लोज होते हैं, जैसे 92 है तो 93 है या 94 आया, तो इसका मतलब है कि इसको मदर टिंचर लेवल की मेडिसिन देनी चाहिए या बहुत कम पावर की डेसिमल स्केल की देनी चाहिए। अगर इससे जो है वो बढ़ता है 5-6 हुआ, तो इसका मतलब इसको 30 पावर की चाहिए। अगर ये 10 से जो है ऊपर चला जाता है, तो इसका मतलब इसको 200 पावर की चाहिए। अगर ये 30 से ऊपर चला जाता है, तो इसका मतलब इसको होम्योपैथी की मेडिसिन स्टार्ट करना चाहिए 1000 पावर से। तो एक चीज जो है ये प्रैक्टिकली देखिए कि ये बड़ा कारगर है। अब इसी फिनोमिना को, जब इसी एक्सपीरियंस को और इसी ऑब्जर्वेशन को जब आयुर्वेद ने इसको कन्वर्ट किया, इसको आयुर्वेद में ट्रांसलेट किया, तो उसमें जो है वो सिंपल मेडिसिन चाहिए, जैसे काढ़ा है या चूरन है या और कोई वटी है, आप कम से कम मेडिसिन दें, या इसको जो है वो थोड़ा सा जो मॉडरेट किस्म चाहिए, या इसको और ज्यादा स्टैंडर्ड लेवल की दवा चाहिए, आप ये फिक्स कर सकते हैं इसके साथ। ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, और मुझको मिलता भी है, तो पता लग जाता है कि इसका जो है जैसे किसी का 40 आया, 40 का गैप है, तो इसका मतलब है कि इसको बहुत जो है वो सुपीरियर क्लास की और फ्रीक्वेंसी में इसको दवा देने की जरूरत है। अगर आप फ्रीक्वेंसी में नहीं देंगे या उतने लेवल की मेडिसिन नहीं देंगे या उतने लेवल का फाइटोकेमिकल शरीर में नहीं पहुंचाएंगे ताकि वो काउंटर कर सके डिसीज को, तब तक जो है आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। और टाइम जो है उसमें एक पता लग जाता है कि अगर 40 आया है तो इसको 40 महीने का इलाज करना चाहिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ शामिल है जी सुधीर बग्गा जी, आज शायद दिल्ली से है। सुधीर जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, मेरा वीडियो नहीं चल रहा लेकिन नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। सुधीर जी is MD from many years ago in Maulana Azad Medical College, where he now lives in America and lives a very happy life in America, but he also runs a clinic in Delhi जी। अब सुधीर जी की ये सवाल है जी, थोड़ा inexpensive न्यू डिवाइसेस कैसे बनाएं कि आयुर्वेद और योग की सोच ले आके उसको थोड़ा कहीं हमारी नाड़ियों की वो वगैरह लेके कुछ हो सकता है कि नहीं। तो सुधीर जी, लीव इट विद यू। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर बाजपेयी, सवाल ये था। हाँ जी, हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार, वो मेरी वीडियो नहीं चल रहा है, सॉरी। कहाँ पर है? हाँ जी, सवाल अमेरिका में कहाँ पर है सर? है जी, दिल्ली में। अच्छा, आप दिल्ली में ही हैं? अभी तो अभी दिल्ली में हूँ। कहाँ पर है दिल्ली में? सफदरजंग हॉस्पिटल के पास, भीकाजी गामा प्लेस पर। अरे वहां तो मैं जाया करता था ना जब ये टेस्ट हो रहे थे इसके ETG आयुर्वेदा स्कैन के, तो मैं वहीं से ही तो जाता था, वो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट उधर। एक बार उनका प्रश्न सुन लेते हैं हम सर। हाँ बताइए बताइए। सवाल मुझे ये था। बात करने की बहुत आदत है, ये आप समझ लीजिए, मैं बोलता बहुत हूँ, इसलिए मैं सबसे क्षमा मांगे ले रहा हूँ कि भाई अगर किसी को बहुत ज्यादा ओवर जो है वो लगे तो मुझको माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी आदत है। नेता हूँ ना विश्व हिंदू परिषद का और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का, इसलिए बोलने की बहुत आदत। जी सर, बग्गा जी को बोलने दीजिए थोड़ा सा। बताइए बताइए। अब बोलिए साहब, वाजपेयी, मैं आपको सुनने के लिए तैयार हूँ, आप बताइए। आपने वो जो त्रिदोषा ग्राम बनाया, हाँ उसमें जो ECG कॉम्प्लेक्स में PQRS आता है, हाँ उसमें हाँ आप बॉडी ऑर्गन्स को कैसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं? हाँ हाँ हाँ, ये सवाल जो है मुझसे जो है साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी में भी पूछा गया था, और ये सेंट्रल रिसर्च काउंसिल फॉर
आयुर्वेदा एंड सिद्धा, वहां भी पूछा गया था। उस समय डॉक्टर लावेकर थे। और मेरा ख्याल है शायद जो पूछने वाले थे वो जामनगर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के जो चांसलर थे, वाइस चांसलर, उन्होंने शायद ये पूछा था। तो मैंने उनको जो है वो जवाब दिया था कि इसमें PQRST हम नहीं लेते हैं, इसमें हम पूरा सेगमेंट लेते हैं और उसको नापते हैं, पूरा सेगमेंट। तो उसको मैंने आयुर्वेदिक नाम दिया है। ये 9 बनती हैं जा करके, और A का मतलब है वो PVAP, Y का मतलब है P1, हम उसको कहते हैं, और Q का है वो E से है आयुर्वेदिक, उसका नाम दिया है। तो उसी तरीके समझ लीजिएगा। और जो ये R वेव जो जाती हैं, इसको हम 2 सेगमेंट में उसको नापते हैं। अब तो खैर ऑटोमेटिक मशीन है, वो सब सारा नाप के हमको दे देती है, और पूरा कैलकुलेशन है उसका, सॉफ्टवेयर है, बहुत बड़ा है, और उसको सब पूरा कैलकुलेट करके वो देती है। जो सवाल आपने पूछा कि जो इलेक्ट्रिकल वेव्स हैं वो AV नोड से चलती हैं, वो AV नोड से ऐसे नोड, और ऐसे नोड से बंडल ऑफ ही जो फिर पर्किंस फाइबर में, फिर उसके बाद कहाँ जाती हैं? नहीं डॉक्टर बाजपेयी, ये नहीं सवाल था। हाँ मेरा सवाल था, जो हाँ आप पूरी नापते हैं उसमें हाँ आप ऑर्गन डिसफंक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते वही हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, वही मैं बता रहा हूँ, वही मैं अच्छा, बताने जा रहा हूँ। ठीक है। उसी के बारे में बता रहा हूँ कि जब वो उन्होंने कहा कि साहब ये इलेक्ट्रिकल जो है ना वो कहाँ से आते हैं, जो इलेक्ट्रिकल है वो कहाँ से आते हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मैंने डिप्लोमा भी किया है, और इसीलिए जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में मुझको बहुत अच्छी जानकारी है। ये मशीन जो है बनवाने में IIT और हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर से भी लगे रहे, और जो मेरा अपना तजुर्बा था इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली है क्या कि शरीर के अंदर जो है वो ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी होती है, और वो 0 to 90 प्लस में और 0 to 90 माइनस में होती है। जब हार्ट जनरेट करता है साइनो आरिकुलर नोड से, वो सारी AV नोड से ऐसे नोड में आता है, आरिकुलर नोड से साइनो आरिकुलर नोड में जब पावर आती है, और उसके बाद वो बंडल ऑफ हिज में और पर्किंस फाइबर तक फैल जाती है, तो इलेक्ट्रिकल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे शरीर में डंप कर जाते हैं। अगर ये डंप नहीं करेंगे तो शरीर खतरे में आ जाएगा, क्योंकि फिर दोबारा जो उसको चार्ज करने के लिए हार्ट के जो AV नोड को जितनी पावर चाहिए, अगर उतनी नहीं मिलेगी तो हार्ट की मसल्स कम होती चली जाएंगी। तो जब ये पूरे शरीर में फैलती हैं, ये खाली वहीं तक सीमित नहीं रहती हैं। मुझसे ये सवाल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे फिजियोलॉजी के, डॉक्टर SK महापात्रा, वो आए थे। उन्होंने देखा था वहाँ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, और एक साथ में रहे पूरा। उन्होंने एक मरीज का टेस्ट कर, 2 मरीजों का टेस्ट कराया, पूरा रिकॉर्ड लिया। भारत सरकार ने खुद उनको बुलाया था टेस्ट के लिए, और उन्होंने ये सवाल पूछा था जो आप हमसे पूछ रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है। आप जो समझते हैं कि आप जो पहली बार पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ बड़े मूर्धन्य लोग थे, और उन्होंने तो मेरी पूरी छीछा लेदर कर दी, जिसमें सबसे ज्यादा थोड़ा मैं संक्षिप्त में बोलिए ना गुरुदेव, समय हो चुका है, थोड़ा संक्षिप्त में बोलिए ना। हाँ, तो वो जो है वो जो इलेक्ट्रिकल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे शरीर में फैल जाते हैं, और जब आप उसको एक ये एक्चुअली में ECG हम इसको नहीं कहते हैं, क्योंकि इसके साथ में और भी सेंसर है, बहुत लेटेस्ट टाइप के सेंसर हैं। तो वो बड़े मालिक जो वाइब्रेशंस है शरीर के, या इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस है या और दूसरी चीज है, उसको वो पिकअप कर लेता है। और एक चीज और है, ये जितने भी आपके ऑर्गन है, उदाहरण के लिए आप लीवर को लीजिए, लीवर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल जो वो इलेक्ट्रिकल चार्जेज होते हैं उसके वो बाहर की तरफ फेंकता है,
और उसको हम पिकअप कर लेते हैं। अगर अगर गाल ब्लेडर के अंदर कोई गड़बड़ी होती है तो अगर पथरी हुई या गाल ब्लेडर कोई गड़बड़ काम करता है तो उसकी जो टी वेव है, हम उसको टी वेव कहेंगे, तो वो टी वेव नीचे आ जाती है, उल्टी हो जाती है। जब वो उल्टी होगी तो समझ जाते हैं कि इसको जो है या तो लीवर की कोई प्रॉब्लम है, तो लीवर की जो है वो प्रॉब्लम है, या तो हार्डनेस हुई रही होगी या और कुछ है। तो उसको फर्दर, क्योंकि ये डिटेक्ट जो है वो कर तो देता है कि कोई नॉर्मल बात है, इसको और ज्यादा फर्दर जो है वो देखना चाहिए। तो उसके लिए आगे जो है वो अल्ट्रासाउंड का जो है वो टेस्ट कराते हैं, भी पता लग जाता है कि इसको पथरी है या इसके जो है वो गाल ब्लेडर जो है वो बढ़ गया है या सूजन है या और कुछ है, तो ये डिटेक्ट कर देता है। इसमें जो टी वेव है वो इन्वर्ट हो जाती है। सिमिलरली जो है वो जो स्लैंट है इसके, वो अगर दाहिनी तरफ है या बाई तरफ है या मिडिल में है, तो उससे पता लग जाता है कि इसके हार्ट की पोजीशन जो है वो कैसी है। तीसरा, इसमें ये पता लग जाता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सर के ऊपर ज्यादा है या मिडिल में है या सर से नीचे है। ये डायग्नोसिस में बहुत काम आती है, क्योंकि अगर सर की तरफ किसी को कोई ब्लड सर्कुलेशन अधिक होने की तकलीफ होती है, तो इसका मतलब है कि उसको जो है वो कुछ मानसिक जो है वो तकलीफें हो सकती हैं। और नीचे जो है वो पेट की वात और कफ की वात और पित्त की कमी हो सकती है, और ऊपर जो है वो बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब कफ जो है इसका बढ़ा होगा। तो ये डायग्नोसिस में भी काम आता है। और जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सब कहीं ना कहीं से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसको बाहर की तरफ फेंकते हैं। जो इलेक्ट्रिकल चार्जेज होते हैं उनके, वो बाहर की तरफ फेंकते हैं, जिसको ये पिकअप कर लेता है। और पिकअप करने के बाद हम उसको स्टडी करते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में जो है उसको कन्वर्ट करते हैं, और तब जाकर के वो पूरी एक रिपोर्ट बना देता है कि इसमें ये तकलीफ है। और कुछ पूछिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक और यू वेरी मच। पूछिए भाई, हम तो बैठे हुए हैं, आप लोग तो कम पूछ रहे हैं, और पूछिए। डॉक्टर साहब, वो इसके बारे में, वो आईआईटी कानपुर के साथ जो आपने किया जी, वो मशीन के बारे में अगर 2-3 मिनट में थोड़ा सा बताएं जी। हाँ, वो मशीन के जो है वो बन गए हैं। हाँ और जी। मैंने अभी आपको दिखाया भी था, 1 सेकंड रुके, मैं और दिखा दे रहा हूँ। उसके 2-3 मॉडल है। एक तो ये मॉडल है, ये आप देखिए, ये आईआईटी का है, इसमें लोगो इसमें दिया हुआ है आईआईटी कानपुर। हाँ जी। और ये एक ऐसे मशीन है जो कि आपको बहुत से जो है वो डाटा दे सकते हैं। अभी देखिएगा, ये हवा का जो है वो रिकॉर्ड करने लगेगा। ये बड़ा पावरफुल है। तो ये क्या करता है, जब इसको कुछ अभी नहीं दिखाइए मत, कृपा करके सर दिखाइए मत अभी। अरे सर, दिखाई दे रहे भाई, देख अरे ले। प्रार्थना कर रहा हूँ सर, समय बहुत ओवर हो गया है। अच्छा, रहने दीजिए। इसके बाद प्रार्थना कर रहा हूँ सर। इसमें जो है वो एक होम्योपैथी का भी स्कैनर इजाद कर दिया है होम्योपैथी वालों के लिए। वो मैं समझ गया सर। छूट जाए, वो बेचारे कहा छूट जाए, उनके लिए भी कर दिया है, यूनानी वालों के लिए भी कर दिया है। और एलोपैथी वाले जैसे चाहे उसको वैसे इस्तेमाल करें भाई, उनके लिए तो कोई बाउंडेशन नहीं है। तो और कुछ पूछना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिखाऊंगा। आई एम सॉरी दैट शायद बगा जी अपना उत्तर नहीं पाए हैं, क्या लेकिन चीज? वो अभी मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए रिस्पेक्टेड प्रोफेसर डॉक्टर वीके अग्निहोत्री जी को इनवाइट करना चाहता हूं। डॉक्टर वीके अग्निहोत्री, एक मिनट साहब, अग्निहोत्री जी का डॉक्टर सोफी जी, प्रोफेसर गुलामुद्दीन सोफी जी। Am I audible to you, sir?
I don't think so that he is listening my words. मैं respected Professor Dr. V.K. अग्निहोत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने concluding remarks दें. Thank you, Pawan Sharma sir, and our regards to big dignitaries present in today's webinar, Professor Madan Singh Velu ji, Professor S. Sudhakar Reddy ji, Professor Abid Ali Ansari ji, our Vishnu Prasad Sharma ji, Anand Prakash Pandey ji, well, and all others of whom I could not just name. I'm afraid I could be able to justify or make a proper comment over today's speakers, as I'm not the person of Nidan or pathology, basically, though we are all person of Ayurvedic sciences. What subject or what sector our revered Professor Bajpai ji touched, that really, in my words, they talked about the pathophysiology of Ayurvedic sciences with relation to the several diseases taking place. Though the terminology is based on the modern medicine, I don't think that it is our dependency or our compulsion that we should talk about. He talked about so many things regarding the pathophysiology and all that in terms of the nitrate, nitrites, melanin, serotonin, plumbium, zinc, uric acid, everything. That is really good. So, as Dr. Pawan Sharma ji repeatedly requesting that your all devices, if they will be presented on the device day, our webinars will be ornamented like anything. So that sector, I am ready. that sector will go. Sure, sir. That sector will go a long way, and that will be in position to quench the thirst, and especially manufactured with your expertise in terms of electrical engineer and then Ayurvedic expert and making all the efforts. So the thing, of course, homeopathy, Unani. ग्रेजुएट आप बहुत हैं. Had it been in the terms of the Ras Rakta Mas Med Asti Vijay Shukra and their vitiation, we don't think that any of the Ayurvedic literature is being put forward with the parameters. The vitiation of Vat Pitta Kapha is to be measured. Our problem is this. Our texts were written by Acharya Shushya, Acharya Charak and Redwell and the other, the contemporary and their redactors. But the fact is, the first Tika, which has been written by Chakrapani, Acharya Chakrapani, he was not a physician. Neither he was a Ayurvedic graduate. He was grammarian. So because of his grammarianship, he talked about the Ayurvedic and the Sanskrit literature. And sometimes he failed to put out the thought which ever Agnivesh and our Punavasu Atre might have talked about. So that is the entire, and Professor Madan sir might be thinking, as he was talking in the beginning, that how it can be inferred that the seasonal variation may be termed in the terms of the enhancement of the or decreasement of the immunity during a particular season. So that depends. We have not got the parameters. Well, your efforts in the terms of the establishment of Ayurvedic parameters regarding the pathology and Nidan Paksha is very good, and it will go a long way. Our second, thank you. Our second speaker was Madam Nisha Kumari. With what words we should appreciate her? First of all, she touched our heart by saying that she is a scholar and student of Professor Sudhakar Reddy. Dr. Professor Sudhakar Reddy is a very good friend of mine. So if he has been your mentor and he pushed you to this platform, you are now spontaneously speaking like anything. It's really your humbleness towards your teachers, towards Professor Reddy sir, and your presentation. Wow, you really represented the terminology of Ayurveda. And I was just paying full attention to hear that anybody come forward and say that there is Panch Nijan.
there is a concept of Panch Nidan. That should be touched. It is not only Hetu, which is talked about the Nidan. Upshay is also very important. So on today's pathology day, the speaker must have touched the area which is touching with the Nidanam Pur Rupani Upshay Tatha. That would have talked, and then you could have helped. But one thing I would like to appreciate you, that your presentation was so good, and especially your body language. Your body language was so supportive of your presentation that I am quite sure that most of your students might be understanding before you have delivered your sentence. It goes up, it goes down, it comes forward, it dissociates. This is really, I was seeing all these things, how when I am supposed to put the comment, the concluding remarks, really I put all the brain cells open to take inputs, and then it should be inferred in this way. Your body language is really, I don't know to whom I should appreciate, whether it is Professor Sudhakar Reddy or so. Yes, sir. And It's your 3 regular. points, Yes, sir. I got it. It means not a single sentence is being missed by me, whatever you have talked about. So the one point that you talked at 8 pathologies, very good. On the other hand, you especially emphasized on 3 points, and I liked it. The one is Ama. The second one is Ashya Pakarsh. And the third one is Avaran. This is the life. This is the vital most part of the Ayurvedic pathology. A person who stands there, who understands it, he will definitely be able to go for the doshas, anshans, kalpana, resultantly in the terms of the visheshan of Vat, Pitta and Kapha, or the status of Dandaj Roga, it should be deferred. And we can leave this sector to the modern medicine or the other persons who can analyze it, that what is happening in the bodies of the biochemistry level, blood level, and whatsoever. This is their job. Our job is to put forward the Ayurvedic science. So with these words, I would like to congratulate you, to both of you, for your submission. May God bless you, and you go sky high with your such type of presentation. Our special remarks and regards to Dr. Reddy. He is doing very well. As he told that he talked about the Nasya. I would like to say one sentence more to Professor Madan sir. Yesterday, our Vishnupriya madam was there to, and she was delivering. She put forward one point, that is the small kids, they used to crawl on the bhumi, on the earth, and they got some abrasions on crawling, and then they put their finger in the nostrils, which was means dipped with the mud and dust that goes inside the nostril nasal passage, and it irritates the local mucosa, and it results in the form of sneezing, and this sneezing itself throws out the virus of influenza, or so goes the case with the COVID. She wonderfully presented. She also talked about the polished rice and unpolished rice, the white coverage, the red coverage of polish is containing the metformin. How wonderfully she narrated. I today remembering her simply because her knowledge is wonderful. And you people are also full of knowledge, but if it covers the Ayurvedic sciences terminology, that is our pleasure, and you will be the torch holder of Ayurvedic pathology in that place. So thank you very much. I congratulate you. And now thank you, and over to Dr. Pawan Sharma sir. I would like to request Dr. P. Sudhakar Reddy ji. P. Sudhakar Reddy ji. Yes, your mic is unmute, but you are not audible. Dr. Reddy sir, kindly bless us. Your mic is Dr. unmute. Nisha masterly presented the subject. Dr. Reddy sir. Nisha ji, please could you confirm your email address too? I think Sudhir ji has put a message here saying your email address is not working. Sure, sir. Dr. Reddy sir, am I audible to you? Dr. Sudhir sir? Dr. Sudhir Bagga sir? Yeah. Would you like to bless us?
हाँ जी, हाँ जी। I wish I could have attended more of it. I was at the last end, and I was when Nisha was doing the nasal respiration and the gastrointestinal pathology. That was very interesting. Like, I missed portions of it, so I was trying to communicate with her through the email, and this email didn't work. So maybe there's a spelling mistake or something I am doing, or so you can connect with me also, please. And I would recommend Dr. Bajpai कि अगर आप दिल्ली आते हैं, क्योंकि मैं कुछ दिन दिल्ली में हूँ, तो आई वुड लव टू मीट विद यू, जिससे कि हम एक दूसरे के आमने सामने से सारी बात समझ जाएं. इट माइट बी इजियर, या मतलब अगर मैं कानपुर में आऊँ तो आई वुड रेकमेंड कि अगर ऐसे हो सके तो दैट विल बी ग्रेट. सुधीर जी, अगर 2 मिनट में थोड़ा बताएं आपके मन में वो क्या है, वो बैंड वाला, और उसको कैसे कनेक्ट करें जी आपके जो ईडा पिंगला वो नाड़ियों की श्योर. बैलेंस थोड़ा सा, क्योंकि अग्निहोत्री जी है हमारे साथ, इनके काफी कुछ है इसके ऊपर थोड़ा समझ, so he can just guide us a little bit. और बाजपेयी जी भी है हमारे साथ, इनके Thank you, sir. Thank you. इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के साथ काफी है आईआईटी कानपुर की तरफ. राइट. ऐसा है कि डॉक्टर मदन इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, मैं हिंदी में बोलूं, मे बी इट माइट बी इजियर. हाँ जी, हिंदी में हो तो. No problem. We are all Indians. नहीं, हाँ जी, नहीं, ऐसी बात नहीं. सो मेरे जो अभी जो हम कर रहे हैं, जो डॉक्टर बाजपेयी ने त्रिदोषा ग्राम को किसी तरीके से कोरिलेट किया है ईसीजी एंड डिफरेंट ऑर्गन डिसफंक्शन से, वो अभी आपने जो बोला डॉक्टर बाजपेयी, मुझे पूरा भी एक तरफ आमने सामने बैठ के ज्यादा समझ में आएगा. आपने पैथोलॉजी बताई, मैं समझ रहा हूं, लेकिन जो हम कर रहे हैं, अभी मैं बोल रहा हूं, आप भी बोल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो मैं चाह ये रहा हूं, व्हाट डॉक्टर मदन इज टॉकिंग अबाउट, कि अगर हम एक रिस्ट बैंड पे थ्रू द पीपीजी, थ्रू द फोटो सेंसर, अगर वी फाइंड आउट द एक्चुअल pulse rate variability that can be correlated with frequency domain to different body organs. In Chinese medicine is anatomical, and Ayurvedic medicine is quite a lot physiological. So unko interrelate kar denge. That's what I'm trying to, जो Dr. Madan was talking about, कि किसी तरीके से एक बड़ा सस्ता बैंड जिसमें फोटो सेंसर लगे हों, उसी के ट्रेंड में मैं हिंदुस्तान आता हूं, उसको वी हैव टू क्रिएट दिस इन सम फैशन एंड वी नीड टू वर्क टुगेदर. इसमें अगर हम ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे तो ये आयुर्वेद की जो नॉलेज है ये दुनिया में ठीक तरह से नहीं जाएगी, क्योंकि दुनिया को एक्सप्लेन करने के लिए हमको वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करनी है जो मेरे जैसे साइंटिस्ट को समझ में आए. क्योंकि मेरे को आयुर्वेद की कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो मैं उसको कोरिलेट कर रहा हूं. तो हम मिल के अगर करें, बिकॉज इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, एक बैंड बना के, आई एम ट्राइंग टू वर्क विद लॉट्स ऑफ पीपल. संजय छाछड़ जी हैं, ही इज डूइंग सम आईआईटी मुंबई से, लेकिन डॉक्टर बाजपेयी ने आईआईटी कानपुर से किया, तो कानपुर माइट बी ए प्लेस. प्रेजेंटली मैं दिल्ली में हूँ, तो अगर हम किसी तरीके से, आई विल बी हियर फॉर अनदर मंथ, मैं कानपुर आ सकता हूँ, मतलब आई कैन डू दिस, क्योंकि ये मेरा पैशन है. इट नीड्स टू बी डन एंड गिवन टू द वर्ल्ड. जैसे डॉक्टर मदन ने साइंस ऑफ लाइफ के बारे में बताया, और आप कुछ डिवाइस डे के बारे में पूछ रहे थे, तो दैट वुड बी अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. मुझे नहीं पता कब है आपका डिवाइस डे, बिकॉज दैट्स व्हाट नीड्स टू हैपन. वो मैं चाहूँगा किसी तरीके से. इट वॉज गुड अपॉर्चुनिटी, डॉक्टर मदन कनेक्टेड मी ऑल अगेन. वो मैं इनकरेज करता हूँ कि किसी तरीके से हम इस चीज़ को इकट्ठा ले जाएं. और मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दोबारा भेज देता हूँ, जिससे कि आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं. drsudhir@scienceoflife.com. और मेरा दिल्ली का जो कांटेक्ट नंबर है वो है 9821661814. तो आई वुड लव कि अगर हम किसी तरीके से इसको बात को आगे ले जा सके. दैट इज व्हाट माय एम इज. एंड तभी मैं इंडिया आता हूँ बार बार,
because I need this to go from India to the world. तो आप जरा प्लीज हेल्प करिए, कमेंट करिए, प्लीज कनेक्ट विद मी. बाजपेयी जी आप अनम्यूट कर दीजिए जी. अब म्यूट हुआ? हाँ जी, हाँ हो गया. देखिए सुधीर साहब, ऐसा है, हेलो हाँ जी, हाँ जी, सुन रहा सुधीर हूँ. साहब, मुझे सुन रहे हैं? आर यू लिसनिंग में? हाँ जी, हाँ जी, आई एम लिसनिंग, आई एम मैं आपको बता दे रहा हूँ पूरी स्थिति जो है वो ये है कि जब पार्लियामेंट चलती है तो हम लोगों का कोई काम नहीं होता है पार्लियामेंट की शुरुआत के 1 महीने पहले से और 1 महीने बाद तक। चूंकि 2004 से लेकर के और अभी तक मैं भारत सरकार के आयुष विभाग से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे जो अफसर हैं डॉक्टर DC कटोच, वो आयुर्वेद के एडवाइजर हैं, और जर्मनी से डॉक्टर प्रस्यून टेक आए थे रिवर यूनिवर्सिटी के। उन्होंने इसको देखा था और उन्होंने कहा कि हम इसको संभालेंगे, सारा देखेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन डॉक्टर लावेकर और डॉक्टर कटोच ने मना कर दिया था कि ये टेक्नोलॉजी जो है फिर विदेशों में चली जाएगी, इसलिए ये ठीक नहीं है। तो मैंने उनकी बात एक बार सर, जो ये सब पुराना इतिहास है, पुराना आप केवल इतना बोलिए कि आप मिल लेंगे क्या, वो आपको इनवाइट कर रहे हैं. आप आ जाइए, आप कानपुर आइए, मुझे तो आना नहीं, हालांकि मेरा काम है वहाँ पर, आयुष मंत्रालय में ही मेरा काम है, मेरा एक प्रोजेक्ट वहाँ लंबित पड़ा हुआ है और उसको जाना भी है, लेकिन वो पार्लियामेंट चल रही है तो अब कोई काम तो होएगा नहीं, मैं तो भुगत चुका हूँ कई बार जा करके, तो मुझे तो जाना नहीं है। अब अगर डॉक्टर सुधीर आना चाहे तो मोस्ट वेलकम है, आप आ सकते हैं हमारे यहाँ। और मुझको जो है वो अफसरों ने मना कर दिया है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता, और जो सारी टेक्नोलॉजी है वो है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और अवेलेबल है। 8,500 रुपए कोई भी खर्चा करे, टेस्ट करा के चला जाए, पूरा प्रिस्क्रिप्शन ले जाए। मेरा तो अस्पताल भी है, आउटडोर हॉस्पिटल है, अब तो इंडोर भी बना रहे हैं, उसमें 10 बेड का, तो सब पूरा है। मरीज अगर बाहर से आते हैं रहने के लिए, देश विदेश से सब आते हैं, अमेरिका, अफ्रीका, एशियन कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, सारी दुनिया से लोग जो है वो दिखाने के लिए आते हैं यहाँ पर। तो मैं तो सबको देखता हूँ, यहाँ पर पूरा इंतजाम है। 8,500 सबसे कम फीस है उसकी, इसमें पूरे 6 घंटे लगते हैं पूरा टेस्ट करने में, 1-2 दिन का काम नहीं, और सारा काम मशीन का है, मैं कुछ पूछता भी नहीं किसी से, ना हमारे स्टाफ वाले पूछे कि इसको क्या बीमारी है। तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो मेरे लड़के भी डॉक्टर हैं, मेरी लड़की भी डॉक्टर है, वो सब, अब दामाद भी डॉक्टर है, हमने सबको उनको ट्रांसफर कर दिया। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अमेरिका में मेरा नाती पढ़ रहा है, वहाँ मैनहट्टन में इंजीनियरिंग कॉलेज से वो PhD कर रहा है, तो उसने खुद कहा कि अगर नाना कुछ होएगा तो मैं आपकी जो है यहाँ जुगाड़ करवा दूंगा। तो मुझको क्या जरूरत है भाई किसी से जो है करने की, कोई माने ना माने, बैठे अपने घर में, मुझको कुछ लेना देना नहीं, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है। हाँ, अगर कोई जानना चाहता है तो वो लिमिटेड में बता सकता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं बता सकता। पवन जी, हाँ जी, पवन जी चले गए क्या? नहीं नहीं नहीं, है जी. डिवाइस डे कब है जरा बताएंगे प्लीज, कोई डिवाइस डे 17th को सर, क्या चीज? कुछ नहीं, नेशनल डिवाइस एप्रिसिएशन डे. हाँ, उसमें आएंगे, सब बताएंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आपको। नहीं, मैं अब आगे स्पीकर से बात करना हूँ मैं. तो उस दिन है 17th को नेशनल डिवाइस एप्रिसिएशन डे. उस दिन एक नया इक्विपमेंट है तुरिया, that तुरिया will be demonstrated and he has asked me for 1 hour. That is for also body meter invented by makers of Nadi Tarangini. So we will see that, and along with that Dr. D.V. Bajpai will be there. So on 17th December, National Appreciation Day is there. But I hope Dr. Sudhir Wagga ji will be blessing this event. I am adding Dr. Sudhir ji to you to broadcast list, and please attend whenever you have time, whenever you have interest for the topic. Kindly bless the occasion
Professor Madan Thangvelu is our guide. Professor Agnihotri is our guide. So please bless us. Please bless us. Right. Now I would like to move on next speaker, Dr. Sudhakar Reddy sir. This is much awaiting. आप होनहार शिष्या के आप वृद्ध अनुभवी गुरु हैं. प्रणाम 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 डॉक्टर रेड्डी जी. आपकी आवाज नहीं आ रही है. रेड्डी जी नमस्कार. प्लीज. नमस्कार. Unmute. नमस्कार सबको नमस्कार. So happy to have your student today. I'm very proud to say that. Sir, am I audible? Yes, we can hear you, sir. आवाज आ रहा है. Sir, namaskar. Am I audible? Very clear. Yes, sir. Your voice is very clear. Audible? Please continue. Hello? Yes, we can hear Yes, you. yes, you are audible, Sir, sir. am I audible? सुनने के लिए बैठे हैं. बोलिए बोलिए Sir, am I बोलिए audible? बोलिए बोलिए. Hello? But not visible. Sir, good evening to all. Good evening to all learned scholars Now, and my We are sir. sincere and dear student, Nisha Kumari. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sir, I'm Please continue. Please continue. very happy to say that. Hello, sir. बोलिए सर बोलिए. आपकी आवाज आ रही है. First of all, let me congratulate Dr. Nisha Kumari for her excellent presentation, and I am happy to say that sir, I started my academic career with their batch. First day, I taught them, and she was excellent student since starting of the BAMS. And I would like to say once little story when we had taken their batch to one competition in Bangalore every year. IRES academic competition there. So all over Karnataka, nearly 25 colleges will be participating in that program. And during 1999, because of only Nisha Kumari, we were able to achieve the potential for that one. So she participated in 5 events. Now 5 events, she got 4 first prizes and 1 second prize. With this, we got more score, and we could able to got the sheet that year. That is the time of our Nisha Kumari. And once again, appreciate Dr. Nisha and congratulate today's speaker. And already thanks Lord. And thank you, Pawan for giving this opportunity to share my views. Thank you, sir. Thank you all. बहुत अच्छा सर. बहुत अच्छा. आप जुड़ते रहिए, हमें आशीर्वाद देते रहिए, यही हमारी प्रार्थना है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. Thank अब you, हम 15 तारीख को टी डे के दिन मिलेंगे. मेडिकेटेड हर्बल टीज. तो 3 लोग बोलेंगे द्रव्य गुण से, रसशास्त्र भेषज कल्पना से, और एक प्रोफेसर आसाम गुवाहाटी से. तो तीनों बोलेंगे. एक बोलेंगे टी के ऊपर और 2 बोलेंगे आयुर्वेदिक टी के ऊपर. प्लीज प्लीज ब्लेस अस ऑन 15th. वेलकम. गुड नाइट टू ऑल. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. Good night. Good night, all of you. नमस्कार Thank you. निशा. नमस्कार निशा जी. नमस्कार रेड्डी good सर. night, good night, all of you. सबको नमस्कार. सबको नमस्कार. sir. नमस्कार. Sir. यूट्यूब पर भी लाइव है. यूट्यूब की लिंक Good night, sir. आप सबको सर्कुलेट करिएगा प्लीज. Good, sir. अरे वो सर्टिफिकेट तो भिजवा दीजिएगा. नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा.